Okay, so we will be starting with our first topic of bonds, and that would be on time value of money. So, what is time value of money? In order to understand this concept, let's take a few examples. Okay, so let's say we are in a situation that we are supposed to receive money. Okay, so we are supposed to receive money. Let's say we are supposed to receive 1 lakh rupees. So we have an option either to receive it today or receive it after 1 year. Which one would you prefer as a receiver? Which one would you prefer? If you have an option to receive it today and after 1 year, which option will you choose? Today or after 1 year? Today. Today. What about others? Which option would you choose? Today or after 1 year? If you're supposed to receive 1 lakh. Today, ma'am, obviously. Obviously. Yes. So you say that we would prefer it today. Now, why today? I would like to know, why would you like to have it today? And because the cost of inflation comes into the play. Right? Absolutely. And the So value of the one money good, today is not equivalent to the same amount of money at a hmm, period, be it a month or be it a week or be it a year. yes, absolutely. So one good reason is inflation. That is, we're going to get 1 lakh today. We are going to get 1 lakh after 1 year. So the worth of this 1 lakh after 1 year is going to be less because of inflation. Okay, this 1 lakh will have less purchasing power. Okay, this 1 lakh will have less purchasing power in comparison to this 1 lakh because of inflation, right? Because of inflation, things will get more expensive, and what we can purchase in 1 lakh today, we may not be able to purchase the same quantity or quality after 1 year with the same amount, because things have got expensive because of inflation, right? So this is one good reason. Any other reason we can think about that would motivate you to take the money today? Security, ma'am. There is no guarantee I will receive it tomorrow. Why should I risk? Yes, absolutely correct. I'm able to cover my risk. If I take the money today, I'm able to cover my risk of waiting for tomorrow. If the other party is giving me money today, why would I like to delay it? Tomorrow, anything can happen. We don't know. We are removing the risk, we are removing the uncertainty by accepting the payment today. Anything else, any other reason that can motivate you to take the money today? Opportunity cost. Yes, absolutely correct. So, another good reason can be opportunity cost. What is opportunity cost? Opportunity cost is the what best we can do with our money or time. Our money and time always has an opportunity cost. Okay, let's say for example, you're sitting here on Christmas Day, right? So many of you must be thinking, okay, it's Christmas, so it may be a holiday today. There may not be class. Was there anybody thinking that way? Yes, ma'am. Hmm.
So your opportunity cost of sitting here for the class, maybe going out or just chilling, just celebrating Christmas, right? So that is an opportunity cost. That is what next best you could have done with this time, right? So whatever we do, if you're pursuing job, maybe there was some business idea we wanted to pursue, that business idea becomes our opportunity cost. So whatever we forego to do what we are doing, whatever we have foregone, that is referred to as our opportunity cost, right? So everything has an opportunity cost. Our task is to just make sure that we are doing better than our opportunity cost, right? If you're doing better than your opportunity cost, you will always be satisfied. Like if you're sitting for this class, it's worth it to spend 4 hours for your CFA preparation, which would give you um, some benefit in your career. So it's worth the opportunity cost for chilling on Christmas evening, right? So here also, if we talk about this example, if we take 1 lakh today, we can do a lot of things with it, right? Leaving 1 lakh with that person will involve an opportunity cost of taking that 1 lakh today, and maybe we need it, we may use it, or we may invest it, and we may get a rate of return on it which is able to beat inflation also. Let's say if we take that 1 lakh today and invest it somewhere, maybe our business, maybe the financial markets, we are able to invest it and make a return of 15%. So after 1 year, we'll have 1,15,000 against this situation where this person is offering us the same amount of 1 lakh, which is of course going to deplete. Its purchasing power will go down because of inflation. So at this point of time, it very much makes sense to get the money today rather than waiting for 1 year. A, it will help fight inflation. B, it will remove our risk or uncertainty. And C, it has an opportunity cost involved. We can use it, we can invest it, we can do anything with it, right? Okay, so we were very clear that in this situation, we would be taking the money today. Okay, now let's take another situation. Here, instead of the receiver, same situation is there, but the only difference is that instead of receiver, we are the payer this time. This time, we are supposed to make the payment. Instead of receive the payment, we are supposed to make the payment, and we have two options with us. One is to make the payment today, and the second is to make the payment after 1 year. Now, what would you prefer? Today or after 1 year? Yes, as a payer, what would you prefer? To make the payment today or make the payment after 1 year? After 1 year. After 1 year. Why would you choose to make the payment after 1 year? I can use that money for that period of time and can earn that some interest or something on that money till that time. Right. Absolutely correct. Okay, fine. Let me remove these points. Okay, so this was about the story when we were the receiver. Now we are the payer. Okay, so as a payer, what you are saying is that we would prefer to make the payment after 1 year rather than today, for one reason that you quoted is that we can do something. It is going to provide us liquidity today if we
Do not pay this 1 lakh today, rather pay it after 1 year. So this 1 lakh gets free for another 1 year. It provides us with liquidity, which provides us with ample amount of opportunities, right? So again, we can use it, we can invest it. If let's say we are able to invest it at 10% also, then after 1 year we'll have 1,10,000 and we'll have to pay only 1 lakh. So 10,000 income would be extra income would be created from the situation, right? So that is one reason. Risk we are not exposed to, rather the other party is exposed to risk. So we don't have to worry about risk or anything. We can just free our funds and invest it and make some extra bucks out of it, right? Any other point that would motivate you to either pay today or tomorrow, whatever you are supporting? Any other point? Anybody? No point. Okay, fine. Another point that comes to my mind while deciding whether I should delay the payment or take the money today would be the impact this payment will have on my credit worthiness. Okay, what is credit worthiness? Credit worthy means how much. History of payments, Yes. timely payments, Hmm. and Timely payments. and CIBIL score that constitute your credit worthiness. Yes, absolutely. Basically, credit worthiness is an ability of somebody to make due payments as and when, of course, they get due. Okay, so if your credit worthiness is good, expectation is that you will not default on any of your credit payments. So it is actually related to your credit rating. It actually creates your brand value in the market. Now, I, as a payer, if I have to pay the same amount, I would like to delay it to the extent that my credit worthiness is not sacrificed. If the other party is giving me full freedom to decide upon the payment time, whether today or after 1 year, then I don't think it is going to impact my credit worthiness. But if delaying affects my credit worthiness, then I think liquidity is not worth it, because in future, if I need some credit, because I am into business, I may need some credit here and there. So in future, if I need credit and my credit history is spoiled because of this one transaction, I will not be able to find liquidity in the future. So I would like to maintain a balance between today's liquidity that this delay in payment is providing me. I would like to create a balance between this thing and future payment thing. Okay, future liquidity thing. Okay, so we can delay the payment as per the liquidity requirement of the business and as per how much effect it will hold on our credit worthiness. Then only we will be able to do some analysis and make the conclusion that whether we would like to pay today or tomorrow. Nevertheless, if we don't consider, these in-depth points, the first response that always comes to our mind is, if it's about the same amount, we would like to delay the payment, right? We are just assuming that credit worthiness is not being sacrificed here, right? Okay, so these are two cases that we discussed. Now let's discuss a third situation here. Okay, now what is happening in the third situation? Let me write it down. Okay, so as part of the third situation, what is happening is, again, it's about today or tomorrow, that is after 1 year. Again, you are a receiver.
So you are supposed to receive the payment, and you are given an offer. Let's say take 1 lakh today, or take 1,20,000 after 1 year. Now, which one would you prefer? Taking 1 lakh today, or taking 1,20,000 after 1 year? What would you prefer? I mean, it depends upon the opportunity cost that I have today. Yes. It's like if I have a better investment opportunity, like if I get 1 lakh today and invest it somewhere else, Mm-hmm. and I may have some higher returns than 20,000 rupees. So then I'll choose to have 1 lakh today. Else, I'll choose to go for the 1,20,000 after. Okay. Very true. It is based on also the present value of 1,20,000. Sorry. The present value of 1,20,000. Yeah. And what does how on what factor does present value depend upon? With that interest rate. Yeah, that is our opportunity cost only. Yeah. Yes. So the first thing that will help us determine whether we will take the money today or we'll wait for another 1 year to take the money, which is 1,20,000. The first thing that we'll consider is our opportunity cost, right? So opportunity cost again is the same thing as what we can do with the money if we have it today. If let's say we take 1 lakh today and we are able to invest it somewhere giving us a rate of return of 30%, and as per this deal it is just offering us 20%, right? Investing 1 lakh, getting 1,20,000, it's just 20% return. So if we say that we have an opportunity to invest this 1 lakh into something that is able to give us 30% return, then we would like to go for that deal instead of this deal. And at that point of time, we can, uh, expect to take 1 lakh. But in case the expected return is less, if let's say the opportunity cost is less, let's say it's something like 15%. Here we are getting 20%. There we'll get 15%. Now, which one would you like to go for? Let's say your opportunity cost is 15%. Would you like to take 1 lakh today or wait for 1 year to get 1,20,000? What would you choose? Option B. Option B. Okay, fine. What about others? What would you choose? Everyone? 1,20,000 after a year. Sorry, 1,20,000. Okay, Yeah, I have the fine. B option. The B option. Okay. 120,000 option. 120,000. Yeah, second option. Okay, fine. So I guess a lot of people are interested in going for the second option, that is taking 1,20,000 after 1 year rather than taking 1 lakh today and investing it into something that is going to give us 15%. Well, that's perfectly fine. But again, there is a catch there. We're just looking at the returns. What about the risk involved? In investing and trading or in business, one thing is common, that is risk. There's always a risk, right? Even before looking at the return perspective, we should be ensured about the amount of risk that we are taking for that thing. People don't think generally about the risk side, right? They just think about the return side. Okay, 50% return, 100% return. Okay, invest. But what about the risk side? If it is offering 100% return also, if there is a possibility of 100% capital loss, then I don't think it is a good deal. Either, if you're investing 1 lakh, either it will become 2 lakh or zero. I don't think it's a good deal, because it's either this side or that side. Else, if we want to be in the game, we would like to take that much amount of risk that we are able to digest.
we want to risk that much amount of capital that we can lose and still not lose our sleep, right? That is referred to as calculated risk. So here we have not taken any calculated risk. We're just looking at the return. So whenever there is such kind of situation, we would like to know the risk also. We'll go for 1,20,000 if it has lower risk involved. Let's say the other party does not hold a very good name in the market, does not have a very good credit history. Would you still like to go for 1,20,000 option? Here, for 15%, you have quite surety that you will be able to get this 15% return, and there is not much risk on your capital. Versus the situation where 1,20,000 becomes an uncertainty because the credit rating of that person, of that organization, is not very high. So what would you choose now? A option to take 1 lakh today, or B option to take 1,20,000. Now that also depends upon your risk appetite, right? Some people like to take more and more risk, whereas some people like to play conservative. And your risk appetite is determined by two factors. One is your ability, and the second is your willingness. Someone may have a lot of ability to take risk, has a lot of assets, no liabilities, good liquidity, no responsibilities, but yet not willing to take a lot of risk. So there the ability is high, but willingness is low. There can be an opposite situation where somebody is on the verge of bankrupt, a lot of liability is there, but still he or she is okay taking risk. So of course we will have to analyze and look into the risk profiling of the investor or the business person who's there, and by comparing the risk and the return, then only we will be able to do some analysis and come to a conclusion whether taking 1 lakh today would be more beneficial or taking 1,20,000 after 1 year would be more beneficial. So both risk and reward analysis needs to be done here. Agreed, everyone? Yes. Okay, so let's take the last case here. We took about 2 cases. This is the third case. Let's take another last case. So another situation is that we are again talking about 0 versus 1 year from today. Here you have to pay. Okay, so you are the payer and you're getting an option to pay 1 lakh today or 1,20,000 after 1 year. Now which option will you choose and why? Paying 1 lakh today or paying 1,20,000 after 1 year? Which option would you like to choose here? The B option, paying it a year later. Okay, why would you choose that option? My logic is मतलब कि Mhm. I'll have a very मतलब आज ही मेरा 1 लाख रुपए खर्च हो जाएगा, right? Right. So rather than spending my money today itself, I am spending it in parts and just making sure that I have that amount at the end. So Sorry, somewhere your I'm voice was breaking a little towards the end. Can you repeat? yes, I was saying कि rather than spending the whole money at once, I'll Mhm. make sure that I shift my payment a bit forward Okay, so that I but can have here you have to reinvesting. pay. Yeah, but here you will have to pay
20% interest on it also. You will have to pay 20% interest also. Right now, you have to pay 1 lakh, but after 1 year, if you pay, you will have to pay 1,20,000. That means you will have to bear an interest cost of 20%, right? So you are okay paying that cost of 20%. But it depends on the fact na, ki if paying 1 lakh actually disturbs my liquidity or not. If I become illiquid by paying a lakh today, so I would rather prefer to pay 1,20,000 at the end of the year. Okay, fine. And Yes. I feel that liquidity obviously is a problem, but we'll also see like now supposing we have to pay 1,20,000 in the future, so like 20%, so whoa, that interest. But if we are able to invest this 1 lakh today that we have and not pay it like today, and we have a interest like and we are able to generate a return more than 20%, that's when it makes more sense to pay it a year later, because you can still you can pay that interest cost and still book profit because you have invested that amount 1 year of 1 lakh 1 year earlier somewhere where you got a return of more than 20%. Right. If not, then it does not Absolutely. make sense. Yes, absolutely correct. Agree. I totally agree with you. So here, you will have to consider a few things, you know, before you can actually make a final decision. Right. So one thing that you will be looking into would be with respect to, how much liquidity you need today. Do you really need this liquidity of 1 lakh today? First of all, if you need it, then what is the cost of funding? Okay, here the cost of funding is going to be 20%, right? So do you have any other options from where you can arrange for this liquidity, which is cheaper than this one? Okay, let's say if you are able to arrange these funds at a cost of 10% per annum, then why would you pay a cost of 20% on it, right? So you will have to look into the available alternative liquidity routes also. You should know about them. You should know about your alternative cost which is available. And the third thing that you can consider is that, okay, if you have this liquidity and you invest it, how much return will you be able to generate from it? Okay, so if you will wait to pay this 1,20,000 after 1 year only if the other sources of funds are expensive, more expensive than 20%. So let's say if you arrange for this liquidity from outside, it is going to cost you 25%. Here you're going to get it at 20%. So there is a 5% benefit there. So it makes sense then, right? So you would like to go for this 1,20,000 figure only if the cost of funding alternatives that are available to you are more expensive and you are able to generate a return from this 1 lakh which exceeds the 20% benchmark that we have. Sorry, benchmark ki jagah pe we can just call it cost. So if something is going to cost you 20%, then if you're using the funds, then the fund should be able to get you a rate of return which exceeds 30%, exceeds 20%, right? Otherwise, it doesn't make any sense, right? So I hope the point is clear, right?
So there will be a lot of analysis involved with respect to our investment opportunities and what we can do with this amount, and secondly our costing, which is going to be involved. All these things will help us understand whether we should invest, whether we should delay the payment or make the payment today, right? Now what's the point? Let's conclude everything. So we discussed 4 situations. In a couple of them where the amount was the same, it was easier analysis to be done, right? But when we talk about such situations where the amount is different, then we have to do some kind of an analysis with respect to the return, the risk involved, and everything before we you know, make a final decision about which option that we are going to choose and why, right? But the conclusive point is that the value of money is never constant, right? To talk about the value of money, it is never constant and it keeps changing with time, right? And that's why we have to do a lot of analysis in order to decide, in order to make a lot of decisions, a lot of financial decisions. Backbone of all those decisions lies in this concept of time value of money, which simply indicates that the value of money keeps changing with time and is never constant. Okay, so let's do one thing. Let's apply this concept and let's look into some more concepts that would be helpful to us as we progress, right? Okay, so let me remove this part. So let's talk about this interest rate first. So we always come across the concept of interest rate or rate of return when it's about investing decisions, financing decisions, etc., etc. We always come across this term interest rates or the rate of return. Now, what is this interest rate or this rate of return that we are talking about? It can be interpreted or understood in many terms. The most important terms that we should know, which are actually relatable to the rate of return or the interest rate, and those are basically, first is minimum required rate of return. Okay, that is, if you're looking for investment, this is the minimum that you ask for कि इतना तो आपको चाहिए होगा, ठीक है, which can be used as the discount rate also. Okay, so discount rate, minimum required rate of return, opportunity cost, all are actually interchangeable and they hold the similar meaning. Okay, now what would be your minimum required rate of return? That can be determined with the help of your opportunity cost. Let's say if you have the opportunity cost to invest and get something like maybe 5% from FD. So if you're getting 5% from FD, that's your opportunity cost. So if you're investing into stocks, you would definitely like to have a return which is much more than this 5%. Now, why your expectations went up
when you compared FD with stocks, why did your expectation went up? Any reason you can think about? Expectation would go up. I hope to that point everyone agrees. FD versus stocks. The risk factor, ma'am, which is involved. That's the reason Yes. our expectation. Yes, absolutely. So if we are investing into something like stocks versus FD is giving us a rate of return of 5%, but it is very much close to a risk-free return, right? But when it comes to stocks, our expectation would definitely be higher. What would be your expectation if I ask from your side? Like, what would you expect if you're investing into stocks? How much rate of return per annum can you expect, or you think would be justified to expect? Hmm? What do you think? What's 10 to your 15, opinion ma'am. on it? Ma'am, premium over the risk-free rate. Right. And what would be your premium? Just your opinion I'm talking about, not some factual data we're talking about right now. Just your opinion that if you're investing into Indian stocks, then how much would you like to have as your risk premium? At least equivalent to the inflation. So your inflation in the country is, let's say, 6%. You're getting 5% from FD. So you would like to have plus 1% from stocks above FD. No. Adding the inflation to the risk-free rate. Okay, fine. So it would So, be somewhere close to 10 to 11%. okay, so fine. So 10 to 11% is your expectation. To calculate that, you took the FD rate and then you added the inflation rate into it. Okay, fine. What about others? What are your expectations? Somewhere around 15 15 to to 20%. 15%. Sorry, 18 to Somewhere around 20, you said? 15 to 20. Okay, 15 to 20 is another suggestion. How did you come across this I 15, personally would 20? like to, yes, so I personally would like to have a return of investment which is twice the amount of the inflation. So if we Okay, subtract the inflation, I would like to have at least 10 to 12% after the inflation. So that's why 15 to 20% is a good range for me. okay, so you took inflation as your parameter only, right? Yes, inflation will be a parameter. Okay, fine. Any other suggestion apart from this? Any other expectation that we may have? Anything is Around fine here. 15%. Okay, 15%. Looking why at Nifty gives around 15%? 13.2%. I'm considering the index, ma'am. Mm-hmm. Okay, so you're taking the help of the index, that if index is able to get something like what 15% तो निफ्टी दे देता है आराम से, so at least उतना Passive आपको, management. हाँ at least उतना हो जाए जो निफ्टी दे रहा है, right? That is another way of determining your minimum required rate of return. Okay, so we can determine this minimum required rate of return in multiple ways. Okay, one way that we defined was with respect to our opportunity cost. That is, if FD is giving us 5%, then we would be looking for something more than 5%. Okay, because we are taking risk also here. So what did we do here? We took the risk-free rate and we added the risk premium into it in order to get our expected rate of return, right?
This is a very decent way to calculate our expectation. Like, what is the expectation? Expectation is that at least we get the risk-free rate plus whatever risk we are taking, we should get a premium for that. Premium means some extra returns. So we should get some extra return as per the amount of risk that we are taking. This is the viewpoint of whom? This is the viewpoint of a risk averse investor. Who is a risk averse investor? Who is a risk averse investor? जिसको 56 भोग नहीं खाने पर हाँ दाल रोटी चल रहा है. Or we can say the person who is ready to take more risk just when that person is satisfied with the opportunity to make more return. Okay, so there are basically three types of investors that you may see. One is risk averse, the other is risk neutral, and the third category is risk seeker. So risk seeker is somebody who's adventurous in nature, who likes to take more risk, even if they are not rewarded with better returns. They just like to take more risk for the sake of taking more risk because they enjoy taking more risk. Have you seen such category of people around you? PE people and the VC, they are the risk seekers. Right, because we can say that they have so much money that even if some money doesn't work, it will not hamper their life or their lifestyle or their whole portfolio of things that they carry. At that point of time, affordability affordability is there, right? But I have seen people who do not have the affordability also, yet they like to take more risk because Yeah, they are usually the beginners in the market. They go all out. Yes. They don't remember the first rule, that is to protect your capital. I did my first trade in the same way. Okay. Yeah. So yes, the first rule of any business or any investment or any trade is to learn to protect your capital. That is the first lesson that you can learn. How to protect your capital. Then comes the second lesson, how you can manage your risk. And then comes the third lesson, how you can create returns. Returns comes later on. Okay. First thing that is about, it is about capital protection and then risk management. Okay. So we are assuming here that we are all rationals who like to take risk when rewarded for taking risk, not unnecessarily, right? So that's why our expectation is determined with the help of the risk-free rate which is there plus the risk premium that we can expect. Okay, that is whatever risk we'll take, we will be rewarded for it. Because if we are not being rewarded for the risk that we are taking, we are not interested, right? We would rather go for a risk-free investment like a government bond or FD rate or something like that, in case you know, if there is no premium for the risk involved. Okay, just give me one moment here, just a minute. Okay, so this is one point. Now this is how we can determine our minimum required rate of return or our expected rate of return, which can also be linked to our opportunity cost, right? Which is what is the best thing that we can do with our funds if we don't invest in this opportunity. What is the next thing that is available to us? That is another way of calculating it. Like one of you set their expectation based upon the
nifty return. That is, even if you're investing into stocks, there is something called as active investment versus passive investment. Okay, there is something called as active versus passive. Now, in passive investing, our objective is to just make nifty returns or with the flow of the market. If the market is moving up, we'll make money. If the market is moving down, we will lose some money. Overall, in the long run, if you look at the charts of any market, be it Nifty, be it any other index, be it an index of any main index of any country, it has always gone up. So history has proven again and again that even if it's a major crash, something like what happened in 2008 or something like what happened in 2020, there was a major crash, 30-40% correction was there in the markets in a very short span of time. So even including those impacts, still, if you are able to stay with the market for a long period of time, you will be making some money. That is passive investment approach. Okay, some years may be good, some years may be very good. Like if we talk about the time frame from April 2020 to even October 2021. So that's like approximately 1.5 years. 1.5 years, there was a big rally in the markets without even a decent pause, which the markets have taken now. Okay, so since November's beginning, I think, till date, the market is into a pause mode. We can't say that it's a major crash or anything. It's correction going around, which is healthy. Okay, nothing in life can go straight up. We don't go straight up like this. Okay, we have to travel. There are staircases, so we go a little up, then we rest there, or slightly come down before we can move forward again. Okay, so that's how life goes up. That's how market goes up. Market can't go up in a single line. It goes up with its pauses, with its rest period, with its little bit of corrections. So a healthy correction is going around in the markets. Nothing to worry about as of now. Okay, let's see if things change in the future. But as of now, it seems like a healthy correction going around. So even considering these healthy corrections, even considering the major crashes, even after all those stuff, overall, we have a viewpoint that the markets have always gone up. So one way of investment, of looking at our returns, expectations of return, can be to look at our opportunity cost. That is, if I make an effort to actively look for stocks which are doing good, it actually involves a lot of effort. Anybody who trades actively in the markets? Any trader in the class? Yes, ma'am, I do. Okay, so you trade, which kind of trading do you prefer? Swing trading, day trading, or what? I rarely swing trade. I usually hold it for I've bought stocks and I'm going to hold them for many years. Okay, so you are an investor. Yes, you could say that, Primarily. but I don't have that much capital right now to be termed as an investor. So Okay, but that's, everybody starts small only, so that's perfectly fine. मैम important I just generally want to know that ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में सिर्फ 2 to 5% ही लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा क्या रीजन है? इसका ये रीजन है क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है अभी हमारी कंट्री में. वी आर नॉट अ फाइनेंशियली लिटरेट कंट्री एज अ होल. अवेयरनेस नहीं है. पीपल डोंट नो. हम ऑर्थोडॉक्स भी हैं. सॉरी, ऑर्थोडॉक्स भी हैं. ऑर्थोडॉक्स भी है. पीपल आर नॉट सी,
मैं अगर आपको बताऊं, अच्छा हिंदी सब ओके है ना हिंदी से? इफ आई यूज सम हिंदी इन बिटवीन, इज देयर somebody in the class जो कि अनकंफर्टेबल है हिंदी से? इफ सही है। देयर इज एनीबॉडी यू कैन टेल। ओके फाइन, ठीक है, तो आई यूज बोथ हिंदी इंग्लिश। अच्छा, तो अभी पता क्या है कि अगर हम बात करें 2000 से पहले की, ठीक है, हमारे मार्केट बहुत अभी यंग स्टेज में है। इफ वी कंपेयर इट विद समथिंग लाइक यूएस मार्केट्स, तो वहां पे ना मार्केट्स बहुत पुरानी हो चुकी है एंड वहां पर बहुत इवॉल्व हो चुकी है। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अहेड है वहां पर। मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। वहां पर इंट्राडे को एक टैबू या गैम्बलिंग नहीं मानते। जनरल लोग भी, बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वहां पे अभी अगर आप बात करोगे स्टॉक्स की, म्यूचुअल फंड्स की, तो हमारी मे बी सेकेंड जनरेशन होगी मैक्सिमम साइड पे, इफ लुक एट योर एंसेस्टर्स एंड एवरीबॉडी। तो हम लोग ट्रेडिशनली प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी, ये सब जगहों पर इन्वेस्ट करते आए हैं। ठीक है, इफ यू टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स और इवन योर पेरेंट्स, ठीक है, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे क्योंकि यही उन्होंने देखा है, यही उन्होंने सीखा है, यही उन्हें समझ आता है। ठीक है, बट अगर हम स्टॉक्स की बात करेंगे या फाइनेंशियल मार्केट्स की, डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, तो वी मे बी द फर्स्ट जनरेशन और द सेकेंड जनरेशन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो बहुत यंग स्टेज पे है हम अभी एज अ कंट्री अगर हम बात करें। और मेन रीजन है अवेयरनेस नहीं है स्टॉक्स के बारे में या फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। स्कूल कॉलेजेस में कौन बात कर रहा है? यूएस से आप कंपेयर करोगे, वहां पर ये सारी चीजें बच्चों को शुरू से समझाई जाती है। जब तक वो बड़े होते हैं दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट, जो कि आप बड़े होके सीखते हो। क्योंकि nobody is talking about financial planning, financial management, financial markets, investing, trading. Nobody is talking about these things at the school college level. That is the main reason हमारा एजुकेशन सिस्टम ये सब प्रैक्टिकल चीजों को इंक्लूड क्या करता है अपने करिकुलम में? आप सोचो, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही सारा उस पे बेस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। इफ यू लुक एट द करिकुलम ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कुछ प्रैक्टिकल बातें भी है तो वो इतनी थ्योरेटिकली बताई जाती है कि उनका प्रैक्टिकल रेलेवेंस समझ ही नहीं आता, राइट? तो वो सारे कुछ लूपहोल्स हैं हमारे सिस्टम में, जिसकी वजह से ये सब चीजों को लेकर के एक कॉमन पर्सन कंफर्टेबल नहीं है आज की डेट में भी। एंड पीपल डोंट। हाँ, आफ्टर यू कंप्लीट मैं बस ये चाहता हूँ कि एक बार आप क्रिप्टो और बिटकॉइन समझाइएगा कि वो है क्या चीज। ठीक है जी। ओके, सो पर्सपेक्टिव बस इतना है कि न्यू है ये चीजें। इफ वी लुक एट दीज थिंग्स बिफोर 2000, so at that time it was gambling only. Why? Because चीजें बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थी, सिस्टम बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था एंड रेगुलेटर नहीं थे मार्केट में, डीमेटीरियलाइज फॉर्मेट नहीं था, फिजिकल फॉर्मेट था, मैनिपुलेशन का बहुत सारा स्कोप था। तो उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम की मार्केट्स कुछ और ही थी। वहां पर हम फिर कह सकते हैं कि दैट वाज मोर ऑफ अ गैम्बलिंग अप्रोच। एंड जो कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी प्रायर जनरेशन है, उन्होंने उसी टाइम की मार्केट्स अपनी यंग एज में देखी है। तो शायद उनके लिए वही इमेज है मार्केट्स की जो उस टाइम पे थी। तो इस वजह से, एंड दे आर नॉट वेरी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ऑल्सो, तो इस वजह से जो करंट स्ट्रक्चर है, द वे markets are operated currently with technology, we have algo trading going around, we have technical charts going around, there's a whole lot of study and effort involved to learn how to do chart analysis, how to do fundamental analysis, how to trade, how to invest. ये सारी चीजें क्या हो जाती है, एक न्यू थिंग हो जाती है। ठीक है, एंड जो करंट जनरेशंस है
वो फेमिलियर हो रही है, अब कितना समझ के कर रही है या कितना अगेन गैम्बलिंग अप्रोच लेके कर रही है, that only they can tell, the people who are doing it. But it is a technical thing. लोगों को ये लगता है कि भाई आरटी मैट अकाउंट ओपन कर लिया तो कल से प्रॉफिट आने शुरू हो जाएंगे, वी कैन इन्वेस्ट टुमारो. ऐसे नहीं होता, ठीक है. it's a profession, right? It's a profession that you have to learn, understand, then experience, practice and then master, just like any other profession. CFA में आपको पता है कि minimum 2 साल आपको लगेंगे to get the qualification, and that too if you're able to complete all levels at first attempt. तो 2 साल आप देने को तैयार हो CFA को, 2 साल आप MBA को देने को तैयार होते हो, और उससे पहले भी आप 2 साल देते हो उसकी एंट्रेंस के लिए. ग्रेजुएशन के लिए 3 साल चाहिए. तो हर चीज के लिए आपको MBBS करना 5 साल देना पड़ेगा. सो हर चीज के लिए क्या है, टाइम फ्रेम पता है लोगों को. 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे in order to first get the education, then get an experience, then create a brand name and then make big money. सबको पता है लंबे प्रोसेसेस लगते हैं, years of experience लगता है, years of education लगता है किसी भी प्रोफेशन को मास्टर करने के लिए. But when it comes to stock market, people generally don't approach it that way. Don't approach it as a business or don't approach it as a profession, and approach it as a gambler's mindset कि रातों रात कुछ मैजिक हो जाएगा, we will be able to make money, we will be another राकेश झुंझुनवाला. सो वो एक माइंडसेट की बात है, एक माइंडसेट चैलेंज है. वो माइंडसेट एक प्रोफेशनल माइंडसेट, एक बिजनेस पर्सन वाला माइंडसेट आपको चाहिए. वो हर कोई लगाता नहीं है. एंड सेकेंडली नॉलेज चाहिए, टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ठीक है. हर चीज के लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, इसमें भी स्किल्स लगते हैं. तो वो टेक्निकल स्किल्स और वो राइट माइंडसेट अभी बहुत सारे लोगों के पास है नहीं इंडिया में. इसीलिए बहुत कम प्रोपोर्शन लोग आपको दिखेंगे जो कि आपको इन्वेस्ट करते हुए दिखने वाले हैं. Ma'am, but to add to your point, Rakesh Jhunjhunwala made his first money on an insider tip. उसने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे थे किसी कंपनी के फॉरवर्ड के, और उसने इनसाइडर पे बनाया हुआ पैसा. बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाया है पैसा. आज भी चलता है इनसाइडर ट्रेडिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट. बट अगर आप एक जेन्युइन ट्रेडर या इन्वेस्टर हो जिसके पास नहीं है ये टिप के सोर्सेस, तो तब आपको वो नॉलेज और स्किल्स ही बना सकते हैं पैसा मार्केट में, ठीक है. मैम लेकिन जैसे आप हो, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल हो इस मामले में, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो अपने नेटवर्किंग में जो जिसने खुद के दम पे इस मार्केट में पैसा बनाया, और पैसा मतलब फिर तबीयत से, लाइक 2-3 करोड़ 5 करोड़ ऐसा कुछ? इमीडिएट नेटवर्क में अगर मैं बात करूं, मतलब पर्सनल नेटवर्क में नहीं, बट प्रोफेशनल नेटवर्क में आई हैव मेट पीपल who have made good money out of the markets on the basis of technical analysis, fundamental analysis, techno-fundamental analysis, both I've seen. People exist, these kind of people. Yes, people exist. It's not a myth going around. It's not a myth, or it's not a illusion nahi hai ye. It's a reality. People are there, people are making money and they're making good money, but what we don't look at is the years of hard work that they put in for that level that they have achieved. It's not a one-day task. Ma'am, but जैसे मेरा एक question है, I've been tracking markets since 2011, right? So I was not a trader at once, but I was a trader for a good part of the time, right? अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे पूछ रहा था कि जैसे ये अडानी का जो रिन्यूएबल वाला कंपनी का जो था, सोलार का या किसी का, इट रोज फ्रॉम 5 रुपीज टू लाइक 600 to 1100 इन नो टाइम. नोबडी न्यू इट. उसका कोई फंडामेंटल नहीं था, उसका कुछ टेक्निकल नहीं था. पीपल मेड टन्स ऑफ मनी,
they actually मतलब they made tons of money out of that. ठीक है. And that's the how people make money ना, कि ऐसी चीजों पे पैसा बनता है. SBI 150 रुपए पे था, कोई नहीं खरीद रहा था उसको. वो बेचारा फिर 150 से 180 200 रुपए आया, अब जाके उसमें इन्वेस्टमेंट लेके आया कोई, तब जाके 400 रुपए 480 रुपए के आसपास उसकी वैल्यूएशन दी है. द काइंड ऑफ स्टॉक है SBI है, मतलब SBI की जो प्रेजेंस है उसको उतनी वो नहीं मिलता जो मतलब जो कहते हैं ना, मतलब उस चीज को. बट हाँ, दे मतलब द काइंड ऑफ स्टॉक्स लाइक अडानी, दे उसमें पैसा बनाते हैं, फिर वो ऑपरेट होते हैं. ठीक है. तो मतलब पॉइंट क्या, आपका कंसर्न क्या है यहाँ पर, ये इन एग्जांपल कंसर्न से? मेरा बस ये है कि still I am also someone who is a keen interest in stock market. Right. Right, I want to pursue something, a profession that has connection with stock market. Right. Right, somewhere these kind of events create an environment where we pursue these things as a gambling, not as a profession. Like people make money in a very one in a blue moon time event. Okay. That's not Fine. something happening. Or अच्छा. we can say the information transparency नहीं होती. I totally understand what you are saying, and you know, the concern that you have right now, I used to have that concern as a beginner when I started. Okay, so when I started off, I had this concern that you know, news is something we can't rely upon, because people with sources already know about the news and they've already acted upon it. So we don't have any advantage there as a retail trader or investor without sources. Okay. Fundamentals also, you know, we don't really know what is happening on ground in the company. I'm not going and visiting the company sites and looking at what is actually happening. I'm just getting to know what the company is reporting to me or the general public. So I am getting to know only what the company is telling me, and no company will come and tell me something bad about it. Right? So that is a limitation I could sense out of fundamental analysis, that I can do a lot of analysis. I can be very good at analyzing things. But what if the thing that I'm analyzing upon is just fabricated? Because you know, I cannot 100% trust the information that the company is giving to me, because no company will give any bad information about it. And as far as news Obviously, is right. concerned, as far as news is concerned, you know, insiders are always there, will always be there, and there are people with sources and big pockets who are able to get this information sooner than it becomes public, and they are already acting upon it. Many a times it's a good news, and a retail investor may think, okay, it's a good news for the company, the stock should go up, let's buy it. And what is happening at the back end is that these big players who already knew about this news had already bought it and were At a buying very it lower for 10 level. days. Yeah, and they have been buying it for 10 days, 15 days, and suddenly after the news is out, when the public thinks that this is a good time to buy it because it's a good news for the company, they come up and they sell the stock, the big players. So Right. the prices go down This even happens on the 10%. result day. मतलब जो Result result वाले days, a day. lot of result days. Yes. हाँ. You don't know कि Absolutely. ये क्यों चढ़ रहा है, और जब result अच्छा आता है, जब we go into investing and they suddenly fall. Very I know. general So practice. yes, absolutely, very general. So these are all observations that you are able to observe while you know, are involved in the markets. So what is the solution here? What is the solution? Is it, मतलब वो एक टाइम का मल्टी बैगर स्टॉक ही आपको पैसे दे सकता है? इज इट गैम्बलिंग? किस पे ट्रस्ट करें? न्यूज पे नहीं कर पा रहे, फंडामेंटल्स पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हम ट्रस्ट, और इनसाइडर इंफॉर्मेशन है नहीं, एक स्टॉक 5 रुपए का 500 बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा स्टॉक था. ये सब कंफ्यूजन बहुत होती थी मुझे भी.
So I stopped running after all this stuff. I don't follow news. To be honest, I don't follow a lot. I don't go that deep into fundamentals as I used to. ठीक है? I focus upon price. Okay, because price is something that has the ability to communicate a lot more than anything, more than words. The price has the ability to communicate a lot of stuff. Again, it's not 100% foolproof that, you know, if you're working on price action and you're working upon uh, the the price patterns and everything, so working upon all that stuff, then it is going to work 100% of the time. No, nothing is going to work 100% of the time, be it fundamentals, be it insider information, be it news, be it technical analysis, price. Nothing works 100% of the time, right? But you have to develop a system which you develop over time with your experience. I don't know how much you can relate with what I'm saying right now, because I can't go a lot deep into it because our focus area is something else right now. We are deviating from the topic, but would like to just, give you a very brief मतलब समरी टाइप ऑफ कुछ मैं आपको देने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, शायद आपके काम आ सके. ठीक है? सो what I do, I can share what I do. Okay, so I focus on price. I have developed a system. System doesn't work 100% of the time, but the main thing that I've learned over years is that I don't need a system that works 100% of the time. I just need a system that works majority of the times. And two things more I need, and that is risk management and a right mindset, a professional mindset, not a gambler's mindset. Like, I want to invest in a stock which is going to, I am going to buy it at 5 and I'm going to sell it at 500. No, I'm not running after a stock that I can buy at 5 and sell at 500. Rather, I'm looking for a stock which can give me decent returns on regular basis, or a set of stocks that can give me some returns on regular basis, and that too without hampering my capital and while managing my risk. Let's say if I am expecting to get 20% from a stock, not 10,000, just 20%, I am able to risk only 10% of my capital, right? My return is always at least twice of the loss that is involved. That is risk management. So what you need is a proper system that can give you consistent returns, not one-time return, but consistent returns, small consistent returns. It's about a business. आपको कौन सा प्रोडक्ट कब सेल करना है, किस प्राइस पे सेल करना है, किस प्राइस पे खरीदना है, ये सब आप सोचते हो जब आप बिजनेस करते हो. वैसे ही जब आप स्टॉक्स को भी अप्रोच करते हो, तो किस स्टॉक को आपने बाय करना है, किस स्टॉक को आपने सेल करना है, किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है. अगर ये ट्रेड वर्क करता है तो कितना आपका टारगेट होना चाहिए, अगर ये ट्रेड नहीं वर्क करता है तो आपका कितना लॉस होगा, और आपका क्या जो टारगेट है वो 2 times 3 times 4 times योर लॉस अमाउंट है कि नहीं है. फिर उसके बाद आपका वर्क करता है ट्रेड तो उसको कैसे मैनेज करना है, अगर वर्क नहीं करता है ट्रेड तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, अपनी साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करना है, अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करना है जब लॉस देखते हो, तो अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करना है जब प्रॉफिट देखते हो, तो कब एग्जिट करना है ट्रेड से, कब एंटर करना है ट्रेड से. ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इन पे फोकस करो.
कंसिस्टेंट इनकम जनरेशन पे फोकस करो rather than one time big profit. तो अगर ये एक प्रोफेशनल बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट आता है एंड यू आर नॉट रनिंग आफ्टर सम इनसाइडर टिप और सम बिग न्यूज और सम बिग multi-bagger stock, if you stop running after all that stuff and just focus upon something that can give you consistent returns. For example, if you just trade on Nifty, you can make consistent returns out of it. You don't even need any multi-bagger. If you are here to make consistent income, not become quick, become rich quick. रात अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो शायद वो गैम्बलर्स माइंडसेट आपके काम आएगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट मनी बनाना चाहते हो तो एक बिजनेस माइंडसेट ही आपके काम आएगा. समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, ma'am. I got it. Okay. So coming back to what we are here to discuss, not the market but the interest rates. Okay, so to conclude it, there are multiple ways to define our returns, right? Which can be referred to as minimum required rate of return, or are on the basis of our opportunity cost, or discount rate. Now, what is this significance of this discount rate? Let's understand that point next. Okay. For that, let's take an example. Okay, so let me just share my Excel sheet with you. Just a minute. ठीक है, अभी we will be considering one concept, and the concept is about the difference between simple interest and compound interest. I'm sure you must have heard about these two terms, simple interest and compound interest. Can anybody quote the difference between the two? What is the difference between simple and compound interest? सिंपल इंटरेस्ट इज लाइक इंटरेस्ट फिक्स्ड ही रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट वक्त के साथ बढ़ता रहता है. इज इट लाइक दैट? कैसे बढ़ता रहता है वक्त Like- के साथ? इट्स लाइक 1 plus the rate, yeah, to the power t. तो जैसे जैसे वो होगा उतना मतलब ज्यादा मतलब वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उतना ज्यादा फायदा है. ओके, ठीक है. In simple interest, we get interest on principal amount every year, and in compound interest, we get interest on principal amount plus interest accruing. Right. So what we can say is that simple interest में क्या होता है ना, we get interest on principal only, right? तो जो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, जो हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल था, हमें सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट के केस में. बट व्हेन इट कम्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट में वी आर गेटिंग इंटरेस्ट not just on the original principal but on interest also. Whatever interest we are making, we are getting interest on interest. That is compounding. Okay, that we are able to make interest on original principal plus interest. Okay, तो जो भी हम इंटरेस्ट बना रहे हैं उस पे भी हमारे को इंटरेस्ट मिल रहा है. दैट इज बेसिकली कंपाउंडिंग इफेक्ट. एंड compounding effect is actually in the world of investing, it is also known as the eighth wonder of this world. वो जो मैजिक की हम बात कर रहे हैं ना,
वो आपको एक दिन या एक स्टॉक या एक ट्रेड में नहीं मिलता, वो मिलता है आपको जब कंपाउंडिंग इफेक्ट रोल आउट करता है, तो उसका जो इफेक्ट होता है ना, दैट इज लाइक स्नोबॉल इफेक्ट. यू जस्ट स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख, ठीक है, यू मेड 1 लाख फ्रॉम इट. आपका जो ओरिजिनल कैपिटल था वो आप छोड़ भी दो तो अब आपके पास 1 लाख है, दैट इज योर प्रॉफिट. आपने कैपिटल प्रोटेक्ट कर लिया अपना. स्टार्टेड विद 1 लाख, मेड 1 लाख, ओरिजिनल कैपिटल को आपने साइड रख दिया. नाउ यू आर स्टार्टिंग विद योर प्रॉफिट्स. अब जब आप वो 1 लाख से स्टार्ट करो, दैट इज योर प्रॉफिट जो आपने यही से बनाया है. और फिर जब आप प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स बनाने शुरू करते हो तो शुरू होता है आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट. और कंपाउंडिंग इफेक्ट इज लाइक स्नोबॉल. एक स्नो बॉल बनाओगे आप एंड लेट इट रोल, तो जितना ज्यादा स्नो इन्वॉल्व होगा, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी स्नो की, और जितने ज्यादा टाइम के लिए वो रोल करता रहेगा, उतना ज्यादा बड़ा वो बॉल बन सकता है एट द एंड, राइट. वैसे ही जब हम प्रॉफिट बनाने शुरू करते हैं और कंपाउंडिंग इफेक्ट स्टार्ट होता है, तो जितनी हाई रेट ऑफ रिटर्न से कंपाउंडिंग हो रही है और जितने लंबे टाइम के लिए कंपाउंडिंग हो रही है, उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो सकता है विद दिस कंपाउंडिंग इफेक्ट. ठीक है, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, एंड फिर उसके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे और फिर देखेंगे कि उन फॉर्मूलेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं और फिर फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, so first talking about simple interest. If we talk about simple interest, let's say we had a principal of 1 lakh. ठीक है, if you have a principal of 1 lakh and you invest into something which is giving you a rate of return of, let's say, 10%. In one case it is on simple interest basis, and in the other case it is going to be on compound interest basis. So for the simple interest, what is going to be our interest amount? Interest amount is going to be just 10% of 1 lakh, which is going to be 10,000. This is going to be the interest for the first year, right? What is going to be the interest for the second year? What is going to be the interest for the second year? Same, right? So for the second year also, we'll have the same interest, that is 10% of 1 lakh. So 10,000 we'll have. Okay, let's say we were investing for 3 years. So again, for the third year, we'll get 10% of 1 lakh. That is 10,000. In total, if we look at it, this is going to be our total interest, right? Which is going to be 30,000. So after 3 years, what would be the wealth that we have created? After 3 years, we'll have 1 lakh. That was the amount that with which we started, plus 30,000 that we have earned as interest during these 3 years, giving us a wealth of 1,30,000 after 3 years. Now, if we are doing a similar thing, but this time the interest is compounding, not simple, then what will happen? What would be the interest amount for the first year, second year, and third year? Let's look at that. Okay, so if we look at the first year, our interest is going to be 10% of our investment, that is 1 lakh. So for the first year, we will be able to make the same interest that we were able to make in case of simple interest. In the second year though, we will be making interest on the original principal plus the interest
that we have earned in the first year, right or wrong? So for the second year, we'll get 10% of 10,000 plus 1 lakh, right? So we'll get 10% of 1 lakh 10,000, which is 11,000, right? In the third year, we'll get 10% of 1 lakh plus 10,000. That is the interest we earned during the first year, plus 11,000. That is the interest we made in the second year. We add them up, okay? Close the bracket and enter. We get an interest of 12,100, right? If we add them all, we are going to get the total interest to be 33,100. Whereas in the simple interest case, our total interest was just 30,000, right? So we could make how much extra? We could make 3,100 extra, and this extra is because of the compounding effect, that is getting return on return rather than just the original investment. Okay, and the amount of wealth that we would be able to create would be the amount of interest, that is 33,100 combined with our original investment of 1 lakh. So after 3 years, we will have 1,33,100 rupees, which is 3,100 more than our simple interest case. Okay, so this 3,100 is because of the compounding effect. ठीक है ना? So I hope compounding effect is clear, right? Abhi, let's write this stuff on a timeline and accordingly define some terms also which will be useful to us. Okay, so इसका अगर हम एक timeline बनाएंगे, so starting with 0, we are going up to the third year. ठीक है, 0 से थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं हम. 0 ईयर में हमने कितना इन्वेस्ट किया था? हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था. After 3 years, how much did we make as per compounding interest? We were able to make 1,33,100. So जो आज हमने इन्वेस्ट किया, that is the value of money today. Value of money today can be referred to as present value, जिसको हम PV बोल देते हैं. तो एक टर्म यहाँ पर आ गया PV, the full form of which is present value, and if we have to define it, it is basically referred to as value of money today. Okay, so this is value of money today, PV, that is present value. Okay, and what about this amount? What should I call it? If this is PV, that is present value, this 1,33,100 should be FV. FV. That is the future value, that is the value of money in future that we will be able to create if we invest 1 lakh today at the rate of return of 10% per annum. Okay, so this 1,33,100 is nothing but our FV. So this is another term, full form of which is future value, which is value of money in the future. That future can be anything from 1 day to 1 year to 10 years to 100 years, anything, right?
So I hope this point is clear, right? Now, in order to calculate this 1,33,100, what we did was we started with 1 lakh, and every time we had to calculate interest, we took that 1 lakh plus the interest that we have made during the previous periods, right? That is how we calculated it. So we can say that this 1 lakh is our present value. We had 1 lakh, right? For the first year, we will get 1 lakh plus 10% of 1 lakh, right? So after 1 year, we will have 1 lakh plus 10% of 1 lakh. Is it correct? So what I can do here is I can take this 1 lakh common, and I will be left with 1 plus 10% in the bracket. This is the value that I have after 1 year, right? Now, what would be the value after 2 years? Value after 2 years would be whatever I have, whatever value I have after 1 year multiplied by another 1 plus 10%, right? So value after 2 years will be 1 lakh into 1 plus 10%, which is the value after 1 year multiplied with another 1 plus 10%. Now, if I have to do it with respect to value after 3 years, again, a similar approach I can use. So after 3 years, what will I have? I will have what I had after 2 years multiplied with 1 plus 10%, so on and so forth. जितने ज्यादा हमारे years होते रहेंगे उतनी बार I will have to multiply by 1 plus 10%. तो 1 plus 10% into 1 plus 10% into 1 plus 10% को हम mathematically कैसे लिख सकते हैं? We can write it to the raised to the power. ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 lakh into 1 plus 10% raised to the power, जो भी जितने भी number of times के लिए हमें compounding करनी है, that is n, we can say. In this case it is 3. तो 1 plus 10% raised to power 3 करके multiply करते हुए 1 lakh से we can get to the future value of 1 lakh after 3 years. ठीक है? Is it correct, everyone? Yes. Okay. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? We can, this is a derivation, this is the whole process. If we want to summarize whatever we've discussed till now, we can say that the future value is equivalent to whatever present value we have, multiply it with 1 plus the rate of return raised to the power the time frame for which we have invested. So this is the formula of present value. Okay, so now we have the formula for present value, future value, right? Let's talk about a few more terms here, and then I have to talk about how we can calculate it with respect to some examples also, and how we can do it with respect to your calculator. ठीक है? तो अभी to conclude it, our future value is equivalent to our present value into 1 plus r raised to power n. Now, what is this r that I have taken? This r is nothing but the rate of return per compounding period. ठीक है? This is the rate of return per compounding period. What do we mean by compounding period? The number of times compounding is happening. यहाँ पर in this example it was happening once a year.
It can happen twice in year if it's a semi-annual compounding case. तो हमें क्या चाहिए होती है? We need the rate of return per compounding period. Let's say अगर ये semi-annual का केस होता तो यानी कि कंपाउंडिंग इज हैपनिंग ट्वाइस एन ईयर, तो हमारी रेट क्या हो जाती? रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड कितनी होती अगर ये सेमी एनुअल का क्वेश्चन होता? तो व्हाट वुड बी माय आर हियर? कितना होता वो? 6. Yes. 6. How 6? How did you get this 6? 10% अगर पूरे साल का है तो 6 मंथ्स का 5% R/2 आएगा ना सेमी एनुअली. हाँ, सेमी एनुअल होगा तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे. वॉट एवर रेट जो हमें दिया होता है वो ईयरली रेट होता है, पर एनम रेट होता है. सो दिस 10% इज फॉर द होल ईयर. अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है तो 10% डिवाइड बाय 2 दैट इज 5% पर 6 मंथ्स का रेट हमारे पास आएगा. मंथली कंपाउंडिंग होगी तो 10% डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे. डेली कंपाउंडिंग होगी तो 10% डिवाइड बाय 365 कर देंगे. इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, डोंट वरी. ठीक है, तो जो भी है रेट हमारा पर कंपाउंडिंग पीरियड के हिसाब से होना चाहिए. एंड जो हम एन लेते हैं, ठीक है, जो हमने एन लिया है इन आर फॉर्मूला, वो भी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स होता है. ठीक है, which may not be the number of years. In this example, every year once compounding हो रही थी, तो the total number of years was equivalent to the number of compounding periods involved. ठीक है ना? But if this is a situation कि जहां पर let's say semi annual compounding हो रही है, तो 1 year में 2 बार कंपाउंडिंग हुई, 3 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो गई? How many times compounding will be there in 3 years if semi-annual compounding is there? If 3 years, then 6 times. 6 times compounding हो जाएगी. एक साल में 2 बारी, कितने साल है? 3 years है, 3 into 2 6 times compounding हो जाएगी. ऐसे हमारे को नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स चाहिए होते हैं हमेशा, रेट पर कंपाउंडिंग पीरियड चाहिए होता है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. तो आई थिंक क्लियर हो गए. ठीक है, one last term, after that probably we can take a short break and then continue. One last term that we require apart from these 4 terms is PMT, which is referred to as the equal periodic payment. Okay, क्या बोलते हैं उसको? Equal periodic payment. What is this equal periodic payment? कभी भी कोई सिचुएशन है जहां पर कोई भी इक्वल अमाउंट ऑन इक्वल पीरियोडिसिटी, लेट्स से एवरी मंथ, एवरी सेमी एनुअल, एवरी क्वार्टरली, कोई भी एक पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी से एक इक्वल अमाउंट का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, तो हम उसको पीएमटी बोल सकते हैं, पीरियोडिक पेमेंट में काउंट कर सकते हैं. लेट्स से एसआईपी हो रही है, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर ईएमआई पे कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये हम पीएमटी में काउंट कर सकते हैं. ठीक है, सो whenever we are dealing with any question related to time value of money, these 5 parameters will be involved: present value, future value, the rate per compounding period, number of compounding periods, and the equal periodic payments. Right? इनमें से कुछ भी मिसिंग हो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल कैलकुलेटर. ठीक है, तो अभी हमने अपने सारे कॉन्सेप्ट्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के मेन कॉन्सेप्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए. अभी अपने को क्या करना है? इनको अप्लाई करना है डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी लगाते हुए, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हुए, और फाइनेंशियल कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं. ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस करने हैं. राइट, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज इंक्लूड करेंगे हम यहाँ पर, डिफरेंट क्वेश्चंस यूज करेंगे, डिफरेंट एंगल्स यूज करेंगे,
और फाइनेंशियल कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो बट ये सारे पॉइंट्स हम आपके, I would like to include as many examples here rather than talking in theoretical terms. अभी तो हम एक base बना रहे थे, तो I had to use words, but now I would like to switch my gears and focus more upon practical examples. तो एक छोटा मोटा break ले लेते हैं, ठीक है, and after that we'll continue and we'll focus on a lot of examples here, and we'll try to use financial calculator and calculate, do as much calculations and application that is possible. Okay, so let's meet after break and let's continue. Okay. Okay guys, so let's talk about a few examples, a few situations in which we can use these concepts and do some calculations and make some good financial management, financial planning decisions out of it. Okay, so for that, first of all, let's look into your calculator and let me just explain a few basics of how your calculator works, because we will be using financial calculator to do a lot of stuff here, right? So let's do one thing. Let's first walk you through your calculator, post which we will talk about a lot of examples, as many as we can cover. Okay, so let me just share my screen with you with respect to a financial calculator, and meanwhile you guys can also open the app or the financial calculator that you may be having. Just give me a moment here. Let me find it and open it. Okay, so this is how typically a financial calculator looks like. This is BA2 plus Texas Instruments. So there are only two types of calculators which are allowed. Okay, one is this one, and the other is, I think, HP calculator. So you can check out on CFA Institute website also कि कौन से calculators है जो in particularly वो allow करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो. This is one that I've commonly observed and seen around, ठीक है, and I've used it also. तो अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है. वैसे तो सिंपल है, बट ऑफ कोर्स कुछ इसके फाइनेंशियल टैक्टिक्स एंड ऑल है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, कैसे ये वर्क करता है. मेनली फाइनेंशियल कैलकुलेशंस एंड ऑल के लिए ही हम यूज करते हैं, ठीक है ना. अभी देखो, अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे जो चीज एप्लीकेट होती रहेगी हम उसको यूज करते रहेंगे, ठीक है. अभी जिस चीज पे हमारा फोकस है, जो हमारे काम आने वाली चीज है फॉर करंट सिचुएशन, करंट टॉपिक, दैट इज दिस रो, ठीक है. एक बेसिक्स के बारे में मैं आपको इस कैलकुलेटर के बारे में बता दूं. सबसे पहले तो ना, इसमें आप डेसिमल्स 5 प्लेसेस तक ऐड कर दो, ठीक है. ये शायद मैंने आपकी क्लास में बताया था मैंने 5 प्लेसेस तक कैसे ऐड करते हैं डेसिमल. आपकी थी कोई और थी? हाँ, आपने दिखाया था, लेकिन जैसे मैंने ट्राई किया तो मैंने ओके डेसिमल 5 कर दिया. फिर उसके बाद क्या करना है? बस एंटर दबाना है. हाँ, देखो मैं एक बार बता देती हूँ फिर से. देखो, सबसे पहले तो ना, कोई भी आप अगर की देखते हो आपके कैलकुलेटर में, तो उस की में क्या है, कुछ उसके ऊपर लिखा है एंड कुछ उसके पीछे भी लिखा है, ठीक है ना. तो अगर तो जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड. सो अगर तो आपका क्या बोलते हैं, आपको जो उस की के ऊपर है उसी पार्ट को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप वो कर सकते हैं बाय जस्ट प्रेसिंग द की. बट अगर आपको उसके पीछे जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको एक चीज यूज करनी पड़ती है, एंड दैट इज दिस सेकेंड की, ठीक है. तो आपको क्या करना होगा, आप सेकंड पे पहले क्लिक करोगे और फिर इस
डेसिमल पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्मेट वाला विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, कि आप देख सकते हो कि इसके पहले, इस पॉइंट के पहले ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर लिखा है फॉर्मेट, तो हमें फॉर्मेट में कुछ चेंजेस करने हैं। सो सेकंड एंड डेसिमल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ओपन होगा। फॉर्मेट को जैसे ही हम ओपन करते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली DEC लिखा आता है, इंडिकेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आप DEC इज इक्वल टू 5 कर दो, ठीक है। तो आप 5 दबाते हो, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको एंटर करना है एंड देन सेकंड एंड CPT कर देना है। CPT के ऊपर क्या लिखा है, क्विट, तो हम क्विट करना चाहते हैं, तो सेकंड एंड CPT करोगे तो क्विट हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक यही स्टेप्स है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई हैव मिस्ड एनी स्टेप हियर, बिकॉज मेरे पास लाइव कैलकुलेटर नहीं है अभी। नो मैम, इट्स करेक्ट, हो गया। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट मैम, हो गया। ओके ग्रेट। तो ऐसे करके सबसे पहले हम अपने डेसिमल्स ऑन कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, CFA इंस्टीट्यूट थोड़े से डेसिमल्स एंड ऑल के साथ मल्टीपल वेरिएशन के साथ भी आंसर दे सकता है, तो जितने ज्यादा डेसिमल्स होंगे उतना हम ज्यादा क्लियर आंसर, प्रिसाइज आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो एक तो काम हमने ये कर दिया। अब भी हमारे को जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दिस होल चैप्टर से, दिस होल कैलकुलेटर से कंसर्न है, वो है ये वाइट रो, ठीक है। दिस वाइट रो कंप्राइजेस ऑफ 5 पॉइंट्स। जो अभी हमने 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उन्हीं 5 पॉइंट्स पे बेस्ड ये कीज है। N standing for number of compounding periods, IY is representing the rate of return per compounding period, ठीक है। तो R की जगह क्या है, यहाँ पर IY है। PV stands for present value, PMT stands for periodic payments and FP stands for future earnings. तो अगर हमारे पास कोई भी चीजें है जो गिवन है, तो गिवन चीजों को हम यहाँ पर इसमें पुट कर सकते हैं एंड वी कैन कंप्यूट एनी मिसिंग थिंग। इन पांचों में से कोई भी मिसिंग चीज है, वी कैन इजीली कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेटर, ठीक है। मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली में क्या लगता है, टाइम लगता है, एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग दैट फ्रीज योर टाइम, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो आपका टाइम कम से कम लगना चाहिए। तो मैनुअली ये सब कैलकुलेशंस हो जाएगी, बट क्विकली हो जाए इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो कैसे यूज करना है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, राइट। तो पहले एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स एंड फिर इसके साथ कैलकुलेटर के साथ कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी और एक एक करके हम सबको सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। So let's move back to Excel. Okay, I will write down all the examples on Excel. I hope you guys are making notes out of whatever we are discussing. Please do make notes. They are very important and I've already discussed the importance of notes in I think prior classes as well. ठीक है, तो जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं नोट्स बनाओ, कैसे भी बनाओ, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, जो कंफर्टेबल है, नोटबुक कंफर्टेबल है, एक्सेल कंफर्टेबल है, जहाँ कंफर्टेबल लगे सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अभी एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। I'll create a timeline here, ठीक है। So this is case 1 maybe that we will discuss. तो टाइमलाइन क्रिएट कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। लेट्स से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ठीक। सो लेट्स से we are interested in creating a financial plan for us for the upcoming, let's say 20 years, okay. So 20 years का प्लान करते हैं नाउ, ठीक है। बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हाउ वी वुड लाइक टू प्लान। Maybe we have some savings now and we want to invest them for 20 years.
maybe we make a plan to invest something every year, every quarter from now onwards. Okay, first of all, where to invest, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. हाउ मच टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, कितना वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल हो सकता है. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके विल ट्राई टू एड्रेस ऑल ऑफ देम. ठीक है, तो लेट्स से हमारा एक गोल है, एक हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर है, ठीक है, जो हम चाहते हैं कि इतना वेल्थ हम क्रिएट कर पाए इन अनदर 20 इयर्स. कोई भी रैंडम नंबर जो आपको लगता है फिजिबल है कि इतना वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है अगर इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट किया जाए, तो 20 इयर्स में इतना हम अचीव कर सकते हैं. कोई भी सजेशन आपकी साइड से? सजेस्ट करो. फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने वाले हो, फाइनेंशियल प्लानिंग इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो सजेस्ट अ नंबर which you think is achievable to get in 20 years. Any number. It is just an opinion, just an example. Don't get too serious, don't think too much, just 10 give a million. number. Sorry, 10 million. 10 million is how many CR we are targeting? अगर इसको हम crores में convert करते हैं तो कितने crores हो जाता है आपका? 1 CR. 1 CR हो जाता है. Okay, so 1 CR in 20 years. Any other suggestion? Also, we have the amount of wealth we can create in 20 years, or we can target in 20 years. 100 CRs. 100 CR. Okay, so that is the kind of target, हाँ? Target ma'am. लग रहा है अब. अभी सुनने में टारगेट जैसा लग रहा है. 100 CR, 100 करोड़ बनाने हैं 20 साल में. पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? पहले तो पॉसिबल है कि नहीं, बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस द अदर पैरामीटर्स. मैम जोमेटो को 1 बिलियन वैल्यूएशन मिल सकता है 10 साल में, तो हम 100 CR तो बना ही सकते हैं. सही बात है, अग्री टू इट. चलो 100 CR का टारगेट लेते हैं फॉर 20 इयर्स. देखते हैं अगर अब हमारे को 100 CR का टारगेट अचीव करना है 20 इयर्स में, तो उसके लिए हमें कैसे प्लानिंग करना चाहिए कि ये अचीवेबल हो सके. ठीक है, क्योंकि ऐसे हवा में तो नहीं हो जाएगा. एक प्रॉपर प्लान होना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन होनी पड़ेगी. फिर कई बार वो प्लान फेल भी करेगा, जो हमने सोचा था उसके अगेंस्ट भी जाएगा. फिर हमें वहां पर भी इम्प्रूव करना होगा, हमें सेव करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, और वो भी डिसिप्लिन के साथ. बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट if we stick to the plan, improvise it and move forward with discipline, let's see if we can do or not. but क्या numbers चाहिए होंगे? ठीक है, यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करें, क्या numbers होंगे जो हमारे को उस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे. तो 100 CR में सबसे पहले तो हमारे पास कितने जीरो हो गए? 9 जीरो हो गए. आई थिंक 1 CR में 7 जीरोस होते हैं. Yes, 90. या 9 हो गए ना. ठीक है, so this is 2 1 2 3 1 2 3 and 1. So I think this is 9 zeros that we have. So 1 CR target. So ये 1 CR अगर हम इन टर्म्स में बात करें, जो हमने ये लैंग्वेज डिस्कस की थी, इसमें मैं R को let me replace it with IY, that is the language of your calculator. तो लैंग्वेज कैलकुलेटर की यही है, यही कुछ टर्म्स है जो हमने उस व्हाइट की में ऑब्जर्व की थी, व्हाइट कीज में, व्हाइट रो में ऑब्जर्व करी थी, राइट? अभी इस लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? 100 CR क्या है? पीवी है, एफवी है, आईवाई है, एन है, पीएमटी है, क्या है? FE. एफवी है. ठीक है जी. सो दिस
100 CR is our FV, ठीक है। अभी क्वेश्चंस क्या क्या है? क्वेश्चन आता है कि चलो number of years we have defined, the FV that we want to create we have defined that। तो क्या क्या डिफाइन अभी करना है? एक चीज हमें डिफाइन करनी है कि हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या फिर हमें एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है या एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट करना है, और जो भी हम डिसाइड करते हैं तो उसमें क्या हाउ मच टू इन्वेस्ट, ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना होगा, एंड देन वेयर टू इन्वेस्ट, एंड देन हाउ मच वुड बी हाउ मच, या फिर इसको मैं आई कैन राइट इट एज व्हाट शुड बी द रेट ऑफ रिटर्न। ये बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे दिमाग में, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेट ऑफ रिटर्न, हाउ मच टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, एक बार में इन्वेस्ट करें, एवरी ईयर इन्वेस्ट करें। अब इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, और हर टाइप से हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है, हर एंगल से रादर हम इसको स्टडी करते हैं। लेट्स कंसिडर द फर्स्ट सिचुएशन जहां पर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक आंसर हमें मिल गया। हम एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर करेंगे इन आवर नेक्स्ट केस, ठीक है। अभी हम कंसिडर करेंगे अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा नॉट सो गुड, नॉट सो एडवाइजेबल सिचुएशन लगती है, क्योंकि हमारा टारगेट है 100 CR। तो 100 CR क्रिएट करने के लिए अभी हमारे को बहुत सारे पैसे चाहिए। एवरी ईयर कुछ इन्वेस्ट करना है, वो समझ आता है फॉर अ पर्सन हु हैज यू नो स्टार्टेड अर्निंग एंड सेविंग, और हु हैज मतलब उसके पास हेरिटेज नहीं आ रहा, ठीक है, उसके पास कुछ पहले से बहुत सारा पैसा नहीं है टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो फॉर दैट पर्सन आई थिंक एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट विल मेक मोर सेंस। बट ठीक है, अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होगा तो कितने पैसे चाहिए होंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं, वेयर एंड व्हाट शुड बी द रेट ऑफ रिटर्न को हमें फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेयर के ऊपर एक अलग ही डिस्कशन है, ठीक है। वेयर में चले गए तो क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, ब्रीफली डिस्कस करते हैं। बाकी तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम बहुत डिटेल में जाते हैं, ठीक है। सो वेयर की अगर हम बात करें, वेयर टू इन्वेस्ट, तो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है एज ऑफ द डेट जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके हिसाब से? एनी एग्जांपल्स? Can you repeat the question again? The question is, what are the various opportunities available as of the date where we can invest money to create wealth? Stocks, bonds, mutual funds, real estate, अगर पैसा हो ज्यादा तो। Right now cryptocurrency is also trending over there. Right. Okay, so we have multiple options, starting from something like stocks, bonds, mutual funds, to something like cryptos, derivatives, commodities, forex, hedge funds, private equities, properties, REITs। बहुत सारी ऑप्शंस है जो कि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में CFA में डिटेल में भी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, हमने लेट्स से एक बहुत कॉन्क्रीट सा पोर्टफोलियो बनाया। अब 100 CR का टारगेट है, तो एक अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी होना चाहिए। क्या होगा, मतलब we'll have to, मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना। या तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, या रेट ऑफ रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। वन थिंग वी विल हैव टू एज्यूम, इस केस में लेट्स फोकस अपॉन कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, रेट ऑफ रिटर्न एज्यूम कर लेते। इन सम अदर सिनेरियो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है।
So here I have to assume a rate of return. What rate of return should I assume here? Any suggestions from your end? Given the target of 100 CR, what should be my rate of return which I can assume here? Any suggestions we have? $25%, ma'am. ठीक है, चलो. So let's say we are investing at a rate of 25% per annum. ठीक है. We would like to know how much we need to invest today so that if it compound at a rate of return of 25% for 20 years, we will have 1 CR after 20 years. So अगर हम अपने इस कैलकुलेटर की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू कैलकुलेट? वी एफवी, आईवाईएन और पीएमटी. वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट Present value. द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है. So we are targeting to calculate present value. N is 20 for us, right? This 100 CR is future value for us. We are targeting to calculate the present value, and the IY that is given to us is 25%. अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है, किसका? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का. यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करके क्या आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो मैनुअली? एक बार के लिए मैनुअली निकालते हैं, फिर फाइनेंशियल कैलकुलेटर में भी देखेंगे. तो इसी फॉर्मूले को यूज करके कैन यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल? प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाटएवर योर फ्यूचर वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी आपका रेट है रेज टू द पावर n. कर सकते हैं हम कैलकुलेट, ट्राई कर सकते हैं एवरीवन. प्लीज ट्राई एंड लेट मी नो प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है मैनुअल कैलकुलेशन से. ओके, सो आई थिंक some people have calculated the answer. Let me just see how much it should be. So it's how much? 1 CR 15,29,215. Okay. So as said before, that you need a lot of funds to be able to create a wealth. If you know you are investing only one time with a rate of return of 25%, so you will need 1 CR plus to be able to. It's like you've multiplied your capital 100 times. You started with something like 1 CR, you ended up with something like 100 CR, so you have multiplied your capital 100 times in 20 years. Okay, so if you start with 10 lakh, 10 into 10 lakh into 100 would be how much? 10 CR. तो 10 लाख से स्टार्ट करके 10 CR होगा, कितना होगा? 10 CR ही होगा आई थिंक. So 10 लाख से स्टार्ट करके 10 CR तक तो पहुंच ही सकते हो. मतलब you can multiply your capital 100 times if you are able to get a rate of return of 25%. अभी ये मैंने एक्सेल से कैलकुलेट किया, ठीक है, आपने मैनुअली कैलकुलेट किया. अभी हम देखते हैं कि how can we use our financial calculator to do the calculation for us. ठीक है, so let's go to the financial calculator. अभी यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें डिफाइन करनी है. सो सबसे पहले कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है जो आपको फॉलो करना है. जो भी चीजें आपको दी हुई है आप वो फीड करोगे और जो नहीं दी हुई उसको कंप्यूट करोगे. कैसे? लेट्स से 100 CR आपका फ्यूचर वैल्यू है.
तो आप सबसे पहले 100 CR टाइप कर देते हो, दैट इज 1 एंड देन 9 zeros, एंड फिर FV पे क्लिक कर देते हो, क्योंकि ये 100 CR क्या है, हमारा फ्यूचर वैल्यू है, राइट। सो 100 CR आपने टाइप किया और फिर FV पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि FV इज इक्वल टू 100 CR लिखा आएगा, आ रहा है लिखा हुआ? हाँ, ओके, अभी इसके बाद क्या करेंगे? After this, once you have feeded this 100 CR as your FV, PMT आपकी 0 है, क्योंकि पीरियोडिक पेमेंट आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, राइट। सो आप 0 टाइप करते हो और फिर PMT पे क्लिक करते हो। आपको यस, अगर कोई आइटम 0 है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये 0 है, तो आप 0 टाइप करके PMT पे क्लिक करोगे तो PMT इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक मिनट, ठीक है, मतलब ऐसा है कि पहले 100 मिलियन मतलब 100 करोड़ लिखा हमने, फिर FV दबाया, फिर 0 ठीक है, दबा के PMT करना है ना? बिल्कुल। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 25% दिया हुआ है, तो आप 25 पे क्लिक करते हो और IY पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। यू क्लिक ऑन 25 एंड देन IY, तो आपका IY इज इक्वल टू 25 पे आ जाएगा। आफ्टर दिस N इज 20, तो 20 पे क्लिक करोगे और N पे क्लिक करोगे। तो अभी हमने अपने सारे इनपुट डाल दिए, सिंपल सा प्रोसीजर है। पहले अमाउंट डाल दो, फिर जो भी वो इनपुट है उस पर क्लिक कर दो। FV है तो FV क्लिक कर दो, PV है तो PV क्लिक कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अभी हमने सारे इनपुट डाल दिए, आउटपुट चाहिए। आउटपुट क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे? कंप्यूट पे क्लिक करेंगे, CPT स्टैंड फॉर कंप्यूट, तो हम कंप्यूट पे क्लिक करेंगे और फिर PV पे क्लिक करते हैं, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। कितना आ रहा है आपका प्रेजेंट वैल्यू? वही सेम टू सेम जो हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया था। बिल्कुल, तो आ रहा है सबका सेम? क्लियर है सबको कैसे हम कैलकुलेटर पे काम कर रहे हैं? तो ऐसे ही आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो चीजें दी हुई है उनको फीड कर दो एंड कंप्यूट द मिसिंग थिंग एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, राइट। सो अभी क्या करते हैं हम? लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, अनदर एंगल दैट वी कैन वर्क अपॉन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? सेम केस हम ले रहे हैं, सेम केस डिटेल्स ले रहे हैं, बस थोड़े से चेंजेस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करेंगे? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस मटेरियल है। अभी लेट्स से हमारा वही टारगेट है, दिस इज केस 2, टारगेट इज द सेम, दैट इज टू क्रिएट 100 CR in 20 years एंड रेट भी हमने सेम लिया है। बस अभी फर्क क्या रहने वाला है? फर्क ये रहने वाला है that this time instead of one time investment we are looking to invest every year, so every year invest करेंगे, ठीक है, an equal investment to be done every year and we want to calculate that investment। तो अगर हम अपनी टर्म्स में बात करें तो क्या निकालना है हमारे को? PV, FV, IY, N या PMT? क्या निकालना है? एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो क्या निकालेंगे हम? PV, FV, PMT, IY, क्या? PMT. PMT. So PMT is basically an equal amount every year, every month, every period, ठीक है, an equal amount every period is PMT।
तो अभी सब कुछ फीड करोगे आप कैलकुलेटर में और कंप्यूट पीएमटी करोगे, ठीक है। नो प्रेजेंट वैल्यू इज देयर, ठीक है। हम कह रहे हैं कि आज हम कुछ भी नहीं इन्वेस्ट कर रहे, हम बस ये प्लान कर रहे हैं कि एवरी ईयर वी विल बी इन्वेस्टिंग एट द रेट ऑफ 25% टू क्रिएट अ वेल्थ ऑफ 100 CR। वी वांट टू नो कि कितना अमाउंट हमारे को एवरी ईयर इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू अचीव दिस गोल, ठीक है। ट्राई कर सकते हो आप कैलकुलेटर के थ्रू पीएमटी निकालने का। कैन यू गाइस ट्राई इट आउट? मैम मैंने आंसर ऑलरेडी चैट बॉक्स में लिख दिया। ठीक है। So how much is it? It is 29,15,922. ठीक है। Let me also calculate it. आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया होगा। I'll do it with the help of Excel because अभी मेरे पास लाइव कैलकुलेटर है नहीं। सो यस, अभी आपको क्या चाहिए? आपको एवरी ईयर 29,15,922 इन्वेस्ट करना पड़ेगा if the rate of return is 25% and you have a goal to achieve 100 CR, ठीक है। तो अभी कैसे हम अपने प्लान को ट्वीक कर सकते हैं? अगर हमारे को अपने इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कम करना है तो या तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभी कुछ प्रेजेंट वैल्यू इंड्यूस कर सकते हैं या फिर हम अपने रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने प्लानिंग कर सकते हैं कि इफ वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग आवर रेट ऑफ रिटर्न, लेट्स से हमारे को एक पॉसिबिलिटी दिखती है जहां पर कि रेट ऑफ रिटर्न goes up to maybe 30%, 35%, and we are investing something today also along with this periodic investments that we are planning to do, ठीक है। तो एक और केस बनाते हैं हम इन circumstances पे based, ठीक है। So let's work on case 3. Now in case 3, what is the situation? Situation is that we are expecting a rate of return of, let's say, 35% this time, and we are thinking of investing something today, ठीक है। We are thinking of investing something like maybe 5 lakh or 10 lakh, ठीक है। So let's say we are investing something like 5 lakh today and the rate of return has gone up to 35%. Still we hold the same goal of 100 CR. This time what would be my yearly investment? Can you calculate? What should be my yearly investment in this situation? टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी सार्थक 20 इयर्स ही है ना। वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि कितना अमाउंट हमारे को इन्वेस्ट करना है। तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो कैसे पता चलेगा? दैट वुड बी पीएमटी ओनली ना। Okay, so Nandini has given an answer of 10,43,331. Okay, what about others? Are we able to calculate? देखो अगर कैलकुलेशन में कोई भी अगर आपको चैलेंज आता है तो you have to let me know, ठीक है। I will definitely help you out with it, but आपको मुझको बताना पड़ेगा अगर कैलकुलेटर को यूज करने में या कैलकुलेशन में कोई भी अगर चैलेंज है तो you will have to let me know, right? चलो, one answer we have got. Let me also calculate it and then we can verify if Nandini's answer is correct or not. And meanwhile I'm also waiting for other people's answer also, ठीक है। सब लोग आंसर देंगे। Okay, so Sarthak has 6,92,000, which is different from Nandini's answer. So let's see whose answer is correct. Okay, let me just calculate it. So basically, we will be using again PMT formula,
rate this time is going to be 35%. NPR, that is our number of years, is 20. Present value is minus 5 lakh. ठीक है? While using all these calculations, one advice that I would like to give here is that all the inflows you should keep as negative, all the outflows you should keep as positive. All the inflows should be positive, all the outflows should be negative. ठीक है? Because इसका जो फॉर्मूला है वही उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, एंड अगर आप सब चीजों को पॉजिटिव कर देते हो तो कैलकुलेशन नहीं आएगा. ठीक है? सो जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इज इट एन इनफ्लो और एन आउटफ्लो? इट्स एन आउटफ्लो, राइट? तो दिस 5 लाख इज आवर आउटफ्लो, सो इसीलिए मैंने उसको नेगेटिव 5 लाख डिनोट किया है. फ्यूचर वैल्यू, जब हम इन्वेस्टमेंट रियलाइज करते हैं, at that time we get the money, right? So it's an inflow at that time. So future value को हम positive रख रहे हैं, present value 5 लाख को हमने negative रखा, positive 100 CR लिया future value में. ठीक है? That's it. 6,92,463 is the correct answer. Okay, so 6,92,463. I think Sarthak got it right. What about the others? Are we able to calculate this amount? Please let me know. Please communicate. ठीक है? एक अनम्यूट करके आपको बस बोलना है yes or no, और आपको या तो चैट सेक्शन में टाइप करना है. I don't think it's a lot of efforts, but it would really help me in, being in sync with what you are doing. Communication can, because अगर offline classes होती है तो you don't have to maybe say a word also, and just by looking at you I can guess what is going around at your end. बट यहाँ पर जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा. ठीक है? तो ये अमाउंट आ रहा है आपका 6,92,463. Are we getting this amount? No, ma'am. Ma'am, I calculated on Excel and in that I took type as 1. That's why my answer was टाइप wrong. 0. टाइप अभी 0 ही लेना है आपने. टाइप 1 क्या है उसके ऊपर हम एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे अभी इन सम टाइम. अभी आपने Okay. 0 ही लेना है. ठीक है? Okay. Okay. मैम मेरे को आपको ये पूछना था कि आपने वो CFA स्केड्यूल में वो रखा था ना कि एक्सेल का कुछ क्लासेस आप सिखाओगे, फिर TVM, फिर दूसरे सब. तो अगर ऐसा हुआ कि उस टाइम हमारा कॉलेज हुआ कि कुछ जरूरी हुआ और हम नहीं अटेंड कर पाए, तो कब की शेड्यूल्ड है आपकी ये क्लासेस? मतलब कॉलेज का नहीं, जो ये आप कह रहे हो एक्सेल का क्लासेस है आपके शेड्यूल में, वो कब के लिए शेड्यूल है? वो तो पता नहीं, पर मेरे को इतना याद है जनवरी से चालू होगा. का तो आज ही शेड्यूल शाम में 7 बजे, 7 से 9. आपको भी आया मैसेज उसका? अच्छा, एक्सेल हमारा वैसे आज से एक बैच शुरू है 7 to 9 PM का. अगर आप इंटरेस्टेड हो आप अटेंड कर सकते हो. ठीक है? अभी 6,92,463 कोई है जिसका नहीं आया? इज देयर एनीबॉडी इन द क्लास जिसका ये अमाउंट नहीं आया है? सब लोग कैलकुलेट कर पाए हैं ये? ओके, ठीक है. सो दिस इज वन सिचुएशन दैट वी हैव कंसिडर्ड हियर. अभी यहाँ पर whenever we have this periodic payments, तो एक पॉइंट आता है रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ द पेमेंट कि हम पीरियोडिक पेमेंट बोल रहे हैं, वो पीरियोडिक पेमेंट कब हो रही है?
बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में हो रही है या एट द एंड ऑफ द पीरियड हो रही है, ठीक है. It is going to make a lot of difference because let's go to whiteboard to understand this concept of beginning versus end of period and how it impacts our values. वो भी हम पॉइंट यहाँ पर समझेंगे, ठीक है. सो बेसिकली अगर हम बिगिनिंग ऑफ पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन वी हैव पीरियोडिक पेमेंट्स. और पीरियोडिक पेमेंट्स को एक और नाम दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, एन्युटी बोलते हैं, ठीक है. एन्युटी इज नथिंग बट एनी पीरियोडिक पेमेंट्स व्हिच आर हैपनिंग, इक्वल पेमेंट that is happening on equal periodicity, we can call it annuity, ठीक है. अभी जो annuity होती है ना, वो दो टाइप की हो सकती है. One annuity can be ordinary annuity and one annuity can be annuity due. ठीक है. एक हो गई आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी, एक हो गई एन्युटी ड्यू. तो इन दोनों में अभी क्या फर्क है? ऑर्डिनरी एन्युटी होता है जो कि एट द एंड ऑफ पीरियड पेमेंट हो रही है, ठीक है. अगर मंथली है तो एट द एंड ऑफ द मंथ, ईयरली है तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी पीरियड है उसके एट द एंड हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी बोलते हैं, ठीक है. अभी अगर हम बात करें एन्युटी ड्यू की, तो एन्युटी ड्यू मतलब जो कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड में हो रही है, दैट इज आइदर बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो भी है, जो भी पीरियड है उसके बिगिनिंग में हो रही है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू टाइप्स ऑफ एन्युटीज, ऑर्डिनरी एंड एन्युटी ड्यू. दोनों में हमारे कैलकुलेशंस में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि कंपाउंडिंग का जो टाइम फ्रेम इन्वॉल्व है वो काफी डिफरेंट है. कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद रिस्पेक्ट टू अ टाइमलाइन, ठीक है. लेट मी क्रिएट टाइमलाइन हियर. अगर आप एक टाइमलाइन क्रिएट करो एंड वी स्टार्ट विद 0 टिल लेट्स से 5 years एंड हम कह रहे हैं दैट वी आर इन्वेस्टिंग 10,000 every year, but this time we are investing 10,000 at the end of year, ठीक है. तो अभी क्या होगा, we'll have 1 2 3 4 and 5. जो ये फर्स्ट पेमेंट है वो जाएगी at the end of first year, ठीक है. this is at the end of the first year, this is at the end of the second year. तो एक पेमेंट हमारी गई फर्स्ट पीरियड के एंड में, एक पेमेंट जाएगी सेकंड पीरियड के एंड में, एक पेमेंट जाएगी थर्ड पीरियड के एंड में, एक पेमेंट जाएगी फोर्थ पीरियड के एंड में और एक पेमेंट जाएगी फिफ्थ ईयर के एंड में. तो अभी इसको कितना टाइम मिला कंपाउंड करने के लिए? इस पेमेंट को 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. इस पेमेंट को कितना टाइम मिला? इसको 4 years मिल गए कंपाउंड करने के लिए. इसको 1 2 3, इसको मिल गए 3 years, इसको 1 and 2 years मिल गए. इसको कितना टाइम मिल गया? इस पेमेंट को 1 साल मिला क्योंकि इस दिन हमारी ड्यू डेट है, ठीक है ना. इस दिन पे हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं. तो इसको 4 years मिले, इसको 3 मिले, इसको 2 मिले, इसको 1 मिला और इसको कुछ भी टाइम नहीं मिला. जो लास्ट पेमेंट जाएगी वो आज गई है, उसको तो टाइम तो मिला नहीं कंपाउंड होने के लिए, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट 0 हो जाएगा, ठीक है. अभी लेट्स कंसिडर द सिचुएशन जहां पर पेमेंट हमारी जाएगी we are going to invest 10,000 at the beginning.
ठीक है, तो अगर हम बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इन्वेस्ट करेंगे तो फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग क्या हो गया, आज ही हो गया, ठीक है, टुडे, दैट इज टाइम 0। तो एक इन्वेस्टमेंट जाएगी आज यानी बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, दूसरी पेमेंट जाएगी बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, तीसरी पेमेंट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ पेमेंट जाएगी बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर में, एंड फिफ्थ पेमेंट जाएगी बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर में। ठीक है, अब देखते हैं किस पेमेंट को कितना टाइम मिला टू कंपाउंड। इस पेमेंट को आपके पूरे 5 इयर्स मिल गए, 1 2 3 4 5। इस पेमेंट को जो आज ही आपने कर दी उसको 5 इयर्स मिल गए टू कंपाउंड। इस पेमेंट को 1 2 3 4 पीरियड्स मिल गए टू कंपाउंड, इसको 3, इसको 2 एंड इसको 1 ईयर पूरा मिल गया कंपाउंड करने में। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे को ज्यादा टाइम मिलता है टू कंपाउंड अगर हम बिगिनिंग ऑफ ईयर से स्टार्ट करते हैं इन कंपैरिजन टू व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ पीरियड। समझ में आया? तो एंड ऑफ पीरियड के कंपैरिजन में बिगिनिंग ऑफ पीरियड में हमें ज्यादा टाइम टू कंपाउंड मिलता है, इस वजह से जो फ्यूचर वैल्यू आएगी वो इस केस में ज्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, बात समझ में आई? आई होप बिगिनिंग एंड एंड में क्या फर्क है ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे उसी एग्जाम्पल को हमने एंड ऑफ द पीरियड से किया है, अभी हम बिगिनिंग ऑफ पीरियड से कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना अमाउंट हमारे को चाहिए होगा। सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएशन के लिए हमारे को कम अमाउंट चाहिए होगा जब हम बिगिनिंग ऑफ पीरियड में इन्वेस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो अभी वो कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर में बिगिनिंग ऑफ पीरियड में हमें कैसे सेट करना है। जो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर हमारा सेट है वो एंड ऑफ पीरियड की पेमेंट के हिसाब से सेट है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आता है जो एंड ऑफ पीरियड के हिसाब से है, या अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि एंड ऑफ पीरियड के हिसाब से ही है, ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन ही है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे अपने कैलकुलेटर में। बट जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन होता है बिगिनिंग ऑफ पीरियड का, स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा, पहली बात तो इट वुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है। सेकेंडली आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने कैलकुलेटर में ताकि आप इस बिगिनिंग ऑफ पीरियड के इफेक्ट को इंक्लूड कर पाओ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड की कैसे सेटिंग्स को हम चेंज करेंगे फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग अपने कैलकुलेटर में। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम जो हमने एंड से किया है उसको बिगिनिंग से करके देखेंगे कि बिगिनिंग के हिसाब से क्वेश्चन होता तो हमें कितना पीरियोडिक पेमेंट रिक्वायर्ड होता। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, आप अगर यहाँ पर देखोगे तो पीएमटी के ऊपर ही बीजीएन लिखा हुआ है। बीजीएन स्टैंड्स फॉर बिगिनिंग ऑफ पीरियड, पीएमटी के ऊपर लिखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी चीज ऊपर है, किसी भी की के ऊपर है, उसको एक्टिवेट करने के लिए आई विल हैव टू यूज सेकंड। तो आई प्रेस ऑन सेकंड एंड आई प्रेस ऑन पीएमटी। क्या लिखा आता है आपका यहाँ पर, सेकंड एंड पीएमटी, क्या लिखा आता है यहाँ पर, एंड एंड लिखा आता है, यानी कि अभी हमारा जो मोड है वो एंड ऑफ पीरियड के हिसाब से सेट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस डाउन की पे प्रेस करेंगे टू मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट अदर ऑप्शंस दैट वी हैव। आप डाउन की पे प्रेस करते हो, क्या लिखा हुआ आता है, डाउन की पे प्रेस करते हो क्या लिखा हुआ आता है, मुझे तो सिर्फ एंड ही दिख रहा है, स्नैप पे एंड ही दिख रहा है। अच्छा, इज इट पॉसिबल फॉर somebody टू शो मी द कैलकुलेटर, मतलब switch on your video and put your calculator in front of the camera.
ओके, थैंक्स सार्थक। तो अभी इसमें आपने सेकंड और बीजीएन पे क्लिक, आपने सेकंड और पीएमटी पे क्लिक किया तो एंड लिखा आया। हाँ अभी डाउन की पे क्लिक करने पे क्या लिखा आ रहा है? कुछ नहीं चेंज कर नहीं, रहा। डाउन पे नहीं आता, डाउन पे नहीं आता वो। डाउन सेकंड पे और नहीं है। एंटर पे क्लिक करने के बाद, सेकंड और एंटर पे क्लिक करने के बाद it shows me अच्छा, except तब वो symbol। शो कर रहा है बीजीएन, ठीक है, थैंक यू। तो सेकंड हाँ और एंटर पे हम क्लिक करेंगे तो वो बीजीएन शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, हमारा मोड जो है एंड से बिगिनिंग पे चला गया, फिर हम सेकंड और सीपीटी क्लिक करके वी कैन एग्जिट फ्रॉम इट। हो गया एग्जिट। अभी आप देखोगे कि कॉर्नर में कहीं पर आपका बीजीएन लिखा आ रहा होगा, आ रहा है लिखा हुआ? यस। ठीक है, तो बस ये आपके स्टेप्स हो गए। फर्स्ट हो गया आपका सेकंड एंड पीएमटी, फिर सेकंड एंड एंटर, एंड देन सेकंड एंड सीपीटी, दैट्स इट। सेम स्टेप्स आप अप्लाई कर सकते हो बीजीएन से वापस एंड में जाने के लिए। अभी एक चीज याद रखना, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन एंड का होता है, बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर भी एंड का होता है। और अगर बाय चांस बीच में एक क्वेश्चन आ गया आपका बिगिनिंग के हिसाब से, तो आपने अपने कैलकुलेटर को बिगिनिंग में सेट करके उस क्वेश्चन को पूरा करने के बाद डोंट फॉरगेट टू चेंज योर सेटिंग्स बैक टू एंड फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू चेंज इट बैक, राइट। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एंड से होगा, आप अगर बिगिनिंग से कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। एंड टू कंफ्यूज यू, आपको हमेशा आंसर्स में वो बिगिनिंग एंड दोनों के देंगे, ठीक है ना। चलो, अभी बिगिनिंग में सेट किया हमने। अभी सेम क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, लेट्स गो बैक टू एक्सेल टू रेफर टू आवर एग्जांपल। तो जो हम एग्जांपल कर रहे थे, यहाँ पर ये ईयरली इन्वेस्टमेंट थी एंड के हिसाब से, एंड ऑफ पीरियड के हिसाब से। अभी अगर हमारे को ईयरली इन्वेस्टमेंट निकालनी है बिगिनिंग के हिसाब से, तो बाकी सारा प्रोसेस जो है हमारा वो सेम रहेगा। जस्ट द डिफरेंस वुड बी कि हमने अपने कैलकुलेटर को बिगिनिंग मोड पे सेट कर रखा है। तो बिगिनिंग मोड पे सेट करते हुए आप अपनी ईयरली इन्वेस्टमेंट बता सकते हो कितनी आती है। How much yearly investment do we need to make if we are solving the question by beginning of period? 5,12,935 is what Sarthak has calculated. Okay. Let me calculate it on Excel. So minus 5 lakh would be our present value, and positive 100 CR would be our future value, and our mode is beginning of period. So 5,12,935. Are we getting this amount? मैम मेरे को समझ नहीं आया कि हमने बिगनिंग मोड पे किया, फिर हमने सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया, फिर कंप्यूट दबा के क्या करना है? कंप्यूट दबा के पीएमटी दबा दो, जो हमने कैलकुलेट करना है पीएमटी ही कैलकुलेट करना है। इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस केस एंड प्रीवियस केसेस कि प्रीवियस केस में एंड ऑफ पीरियड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इसमें हम बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो बस पीएमटी ही कंप्यूट करना है आपने, तो कंप्यूट दबा के पीएमटी पे क्लिक करना है। तो दिस अमाउंट यू शुड गेट 5,12,935. आर यू गेटिंग दिस अमाउंट और नॉट? ये अमाउंट आ रहा है हमारा, प्लीज कंफर्म। नहीं, मेरे लिए नहीं आ रहा, मेरे लिए कुछ 7 लाख जैसा आ रहा है, पता नहीं क्यों। सेम मैम, कैलकुलेटर पे नहीं आ रहे हैं। 7 लाख जैसा आ रहा है। आप शो कर सकते हो अपनी कैलकुलेटर की स्क्रीन किसी तरीके से वीडियो ऑन करके? हाँ, 1 मिनट।
अच्छा ठीक है, अभी क्या करो, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप 100 CR पहले टाइप करके FP पे क्लिक कर दो। ओके ओके ठीक है, अभी आप 35 डाल के IY पे क्लिक कर दो। ओके ठीक है, इसके बाद अभी आप -5 लाख डाल के, -5 लाख कैसे डालोगे, 5 लाख पहले आपने कर दिया, ठीक है, और उसके बाद कॉर्नर में आपका प्लस माइनस का साइन होगा, तो वो प्लस माइनस के साइन पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली -5 लाख शो करेगा। कर रहा है? मैंने प्लस माइनस किया तो 4,99,499,965 ऐसा दिखा रहा है। प्लस माइनस कौन सा आपने कर दिया, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा प्लस माइनस की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर कैलकुलेटर में ओके ओके दिख गया, This one. ठीक है। ओके ओके, एक ये मिनट वाला। में भी मैं वापस करती हूँ, एक पहले मैं FP कर लूँ। ओके फिर 35 है IY, फिर नहीं माइनस नहीं, हाँ पहले फिर 5 लाख, फिर वो जो प्लस स्लैश माइनस वाला जो की है उस पे हाँ क्लिक हो करोगे, गया माइनस। -5 लाख आ गया लिखा हुआ। हाँ अभी ठीक PV, है, अभी इस पे पीवी पे क्लिक कर दो। हाँ कर दिया। ठीक है, तो अभी आपने IY डाल दिया, N रहता है तो आप 20 टाइप करके N पे क्लिक कर दो। कंप्यूट PMT, हाँ अब आ गया। आ गया? ठीक है, सो आई होप बाकी जिसका नहीं आ रहा था आपका भी आ गया। We are on the same page, everyone. Are we able to calculate this 5,12,935 as our periodic payments? Yes. Okay. ठीक है, so what can we observe? We can observe सब कुछ सेम होते हुए just by investing in the beginning of the period, we needed less amount to invest. और कोई छोटा मोटा डिफरेंस भी नहीं है, एक तरफ we are 6,92,000, so the difference between these two amounts is of 1,79,000. That's a huge thing. That kind of difference we are able to create if you are investing in the beginning rather than end of the period. ऐसा इसीलिए हो रहा है जो हमने पहले डिस्कशन की थी कि बिगिनिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो वी आर गेटिंग मोर टाइम टू कंपाउंड। ठीक है, तो इसीलिए हमें लेस इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। जितना ज्यादा हम टाइम टू कंपाउंड रखेंगे, जितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न रखेंगे, उतना ही कम इन्वेस्टमेंट हमें अभी चाहिए होगा टू बी एबल टू क्रिएट द सेम अमाउंट ऑफ वेल्थ इन द फ्यूचर। ठीक है, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। अभी हमने पीरियोडिक पेमेंट्स के दोनों केस डिस्कस कर लिए, एंड का भी और बिगिनिंग का भी। अभी डोंट फॉरगेट टू चेंज द सेटिंग्स बैक टू बिगिनिंग ऑफ पीरियड, बैक टू एंड ऑफ पीरियड। अभी आपके कैलकुलेटर की सारी सेटिंग बिगिनिंग में हो गई है, तो अभी जो सेम स्टेप्स हमने यूज किए थे वही यूज करते हुए पहले तो अपनी सेटिंग्स को दोबारा से एंड पे आ जाओ। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप सिंपली सेकंड एंड PMT पे क्लिक करोगे, फिर सेकंड एंड एंटर सेकंड एंड PMT, सॉरी CPT, राइट। सेकंड PMT सेकंड एंटर सेकंड CPT पे क्लिक करके एंड मोड पे आ गए हम लोग वापस। अभी what we can do is we can consider another situation. ठीक है, we'll consider another situation to include our periodicity. ठीक है, अभी हमने बिगिनिंग वर्सेस एंड देखा, एन्युटी के डिफरेंट टाइप्स देखे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों कैलकुलेट किया हमने। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया रादर, तो एक क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू पे भी हो जाए। ठीक है, तो अभी एक और केस लेते हैं। इस केस में लेट्स से वी नो हाउ मच वी हैव
टू इन्वेस्ट, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट हमारे पास है हमें पता है, बस हमें ये नहीं पता कि उस इन्वेस्टमेंट से हम कितना बना सकते हैं फ्यूचर में. सो लेट्स से वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग टुडे मैम एंड मेरे को समझ नहीं आया, सो या वापस बोल सकते हैं ये बिगनिंग को कैसे नॉर्मल में करना है? जो स्टेप्स आपने बिगिनिंग में जाने के लिए लिए थे वही सेम स्टेप्स एंड में जाने के लिए भी है. तो सेकंड और पीएमटी पे क्लिक करते हो दिखाता है वो, फिर भी बिगनिंग ही है. बिगिनिंग दिखा रहा है ना. हाँ सेकंड और पीएमटी क्लिक करने के बाद बीजीएन लिखा आ रहा है. हाँ, फिर अब आप सेकंड और एंटर पे क्लिक करो, फिर भी बीजीएन आ रहा है. फिर भी बीजीएन आ रहा है आपका. किसी ने किया एंड में वापस किया किसी ने? किसी ने किया? Yes, ma'am. Same process. Same process. सेम प्रोसेस है ना. हाँ हाँ, तो सेकंड पीएमटी, सेकंड एंटर, सेकंड सीपीटी, यही प्रोसेस आपने फॉलो किया ना सार्थक? हाँ हाँ तो आपका हो गया. मेरा नहीं हो रहा हाँ है. हो सेकेंड सीपीटी, सेकेंड एंटर, फिर भी बीजीएन ही दिखा रहा है. अभी आप सेकंड सीपीटी पे भी क्लिक कर दो. सेकेंड सीपीटी, फिर भी बीजीएन है. हम्म. फिर हो सकता है ऐप में कुछ डिफरेंट प्रोसीजर हो, चेक करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप एक बार देखना गूगल करके या यूट्यूब पे कुछ आपको मिल जाए तो. बाकी आई थिंक कैलकुलेटर में तो सेम ही प्रोसेस था, सेम प्रोसेस से वी कैन गो बैक एंड फोर्थ टू एंड एंड बिगिनिंग. एंड मैम आज जो वो है ना एक्सेल वन टॉपिक, वो आप 8 से 9 ओ क्लॉक तक कर, मतलब 7 से 9. 9. Okay, so abhi we'll take an example where we want to know how much wealth we can create in 10 years if we start with an initial investment of, let's say, 2 lakh rupees, and we are planning to invest every year end. We are planning to invest every year end something like 1 lakh at a rate of return of 15% per annum. So if we invest 2 lakh today and we invest 1 lakh every year at the end of the year with the rate of return of 15% per annum, how much wealth we can create over a 10-year period? This is the question जिसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, so आप प्लीज कैलकुलेट करो ये आंसर and I will be right back in a minute. Till then you can just copy this data and you can do the calculation and let's see who gets the answer right. So we already have an answer by Sarthak and that's like 28,39,483. Okay. What about others? What is the amount you are getting? Here, what do we have to calculate? First of all, we have to calculate the future value, right? तो future value calculate करना है. कितना future value आ रहा है? I want an answer from all of you. ठीक है, I'm waiting for all your answers. Nandini, Sarthak has already given the answer. Parinita and Siddhi. सब लोग आंसर ड्रॉप करेंगे चैट सेक्शन में. ठीक है, I'll be right back. Okay. So, yes, beginning of period से आपका different आंसर आएगा. But Siddhi and Sarthak का different आंसर आया है. नंदिनी का different आया है. And अभी
परिनीता ने नहीं दिया है आंसर. Okay, so let me do one thing. Let me calculate it and let's see. अगर एंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्वेश्चन वाज हाउ मच वेल्थ वी कैन क्रिएट. सो हाउ मच वेल्थ वी कैन क्रिएट इज फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, देर आई वाई में आप 15% डाल दोगे. ठीक है, एन में आप 10 डाल दोगे. पीएमटी में आप -1 लाख डाल दोगे. प्रेजेंट वैल्यू में आप -2 लाख डाल दोगे. अभी ये दोनों ही माइनस हो गए. ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट है हमारी. सो -1 लाख पीएमटी, -2 लाख पीवी. एनपीआर, sorry, N would be 10, IY would be 15, and the future value should be 28,39,483, जो कि which was Sarthak's answer. So well done, Sarthak. You got the answer right. And I think Nandini and Siddhi are finding some difficulty converting back to end of mode. Right? तो एक बार आप देखना, गूगल में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा. गूगल पे या यूट्यूब पे you should easily get some free material और वीडियो to solve this problem of yours. ठीक है, क्योंकि कल से पहले जरूर ये प्रॉब्लम कोशिश करना सॉल्व हो जाए आपकी. ठीक है, क्योंकि यूजुअली जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो एंड के हिसाब से रहेंगे, बिगनिंग के हिसाब से नहीं. मीनवाइल अगर बिगनिंग से भी ये करते तो क्या आंसर आता, सो दैट यू कैन टैली कि एटलीस्ट आपका आंसर ठीक है, आपका प्रोसेस ठीक है, एंड सिर्फ बिगिनिंग की वजह से यू आर गेटिंग अ डिफरेंट आंसर. उस चीज को चेक करने के लिए जस्ट अ मिनट. सो अगर बिगिनिंग मोड से आप करते हो तो आपका आंसर 31,44,039 आना चाहिए. क्या आ रहा है आपका ये आंसर? Siddhi and Nandini, are you getting this answer? 31,44,039.14. Yes. Okay. Fine. So we have calculated future value, we've calculated present value. Okay. We've calculated PMT, we've talked about beginning versus end. This is all what we've covered till now. Now we have to work upon two things. ठीक है, एक तो हो गया कि रेट कैलकुलेट करना या नंबर ऑफ पीरियड्स कैलकुलेट करना, और दूसरा हो गया कि अगर मल्टीपल टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है तो उसका हमारे रेट ऑफ रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एंड ओवरऑल उसका हमारे प्रोसेसेस में कैसे इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे जो रह गए हैं, जो कि हम अगेन एग्जांपल्स के थ्रू ही कवर करेंगे. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. एनी डाउट्स एनीबॉडी सो फार? ऑल क्लियर? ठीक है. So let's move forward with our next example, जिसमें हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे. ठीक है. So अभी let's say we have this case 5. Here again I'll create a timeline for your reference. Now what we are saying is, again we have a time frame of let's say 0 to
ठीक है, 20 years maybe. Now let's say what we are saying is that we start with an investment of 5 lakh today. ठीक है, we are starting with an investment of 5 lakh today at a rate of return of 15% per annum. ठीक है, so we start with an investment of 5 lakh today with a rate of return of 15% and we invest till 10 years. ठीक है, whatever we are able to create in 10 years, we then, acha, let me tweak the question a little. Yeah, chalo, let me keep it simple for you. So we are investing 5 lakh today at a rate of return of 15% for 10 years. Whatever amount we are able to make in 10 years, we then choose to reinvest it. Okay, whatever amount we are able to create in 10 years, we choose to reinvest it at 20% per annum. We want to know how much wealth we can create in 20 years. So total time frame is 20 years. First, we start with 5 lakh. We make an investment for 15% for the 10 years. Whatever amount we are able to make in 10 years, we reinvest it at 20% for another 10 years. We want to know how much wealth we will be able to create 20 years from now. I hope you are able to understand the question. Question के details समझ में आए? Ma'am, there was some problem in my question. Sorry, what are you saying? There was a problem in my internet connection. Can you just repeat the question? Okay. So the question is that we start with an investment of 5 lakh. We invest it at a rate of return of 15% per annum for 10 years. After that, whatever wealth we have created in 10 years, we reinvest it at 20% for another 10 years. We want to know how much wealth we will be able to create in 20 years from now. Let's see how many of you can solve this question. मैम मैं ट्राई करूंगी लेकिन मेरे को लगता है शायद मेरा आंसर गलत हो कि मेरा पहले से ही सोच के रखोगे। इधर अभी बिगिनिंग एंड से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बिगिनिंग एंड का फर्क आपको सिर्फ पीएमटी जब है तभी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका बिगिनिंग में सेट है, एंड में सेट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात, पहले से मत सोच के रखो कि आएगा नहीं आंसर। ओके Okay, so Sarthak has given the answer that is 12,524,513, which is nothing but 1,25,24,513, right? Okay, so Sarthak and Siddhi are getting the same answer. So very good. What about others? Nandini, Parinita, what are the answers that you guys are getting? Well, first of all, this question will be solved in 2 steps. ठीक है? I'm not getting answer by calculator. You should be able to get it by calculator also. There must be something that is not going right. Okay. I got right answer by Excel, but not getting by calculator. Okay. Okay, so I'll repeat the steps. Okay, with respect to calculator, I'll talk in terms of calculator only. So step 1 क्या रहेगा? Step 1 रहेगा
कि आप अपने कैलकुलेटर में प्रेजेंट वैल्यू में -5 लाख पुट कर दो, ठीक है। तो आप टाइप करोगे 5 लाख, प्लस माइनस पे क्लिक करोगे एंड देन पीवी पे क्लिक कर दोगे, तो पीवी विल बी इक्विवेलेंट टू -5 लाख। फिर आप 0 पे क्लिक करके पीएमटी पे क्लिक कर दोगे तो पीएमटी विल बी सेट एट 0, ठीक है। इसके बाद आप क्या क्लिक करोगे, आप 15 पे क्लिक करोगे एंड IY पे क्लिक करोगे टू सेट योर रेट एट 15%, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, 10 पे क्लिक करोगे क्योंकि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है फॉर 10 इयर्स, तो 10 पे क्लिक करके आप N पे क्लिक करोगे। अभी आपका बचा है फ्यूचर वैल्यू, तो आप क्या करोगे, कंप्यूट FB, ये करते हो कितना आता है आपका अमाउंट, 20,22,778.686. ठीक है। लेट मी कैलकुलेट इट। $20,22,778, right? So this is the amount of wealth that we have created in 10 years, roughly around 20 lakhs something. Now what we are saying is we are reinvesting this 20 lakhs something at a rate of 20% for another 10 years. ठीक है. So step 2 would be that अभी ये 20 लाख क्या बन जाएगा, हमारी प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा जिसका फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना है, राइट. सो आवर प्रेजेंट वैल्यू दिस टाइम वुड बी इक्वल टू माइनस दिस अमाउंट, ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग, सो माइनस दिस अमाउंट बिकम्स द प्रेजेंट वैल्यू. पीएमटी वुड बी 0, ठीक है. तो 0 डाल के पीएमटी पुट कर देंगे. प्रेजेंट वैल्यू में 20 लाख समथिंग जो अमाउंट आई थी एग्जैक्टली वही डाल देंगे, ठीक है. एन में this time again we are going to invest for 10 years, another 10 years, so n would be 10. IY this time would be different, so this time our IY, just a minute, this time our IY would be 20%, ठीक है. so 20 टाइप करके हम IY पे क्लिक करेंगे, ठीक. क्या बचा, फ्यूचर वैल्यू बचा, तो अभी कंप्यूट एफपी कर देंगे. कितना आ जाता है आपका, Got it, ma'am. I was not taking PMT 0, that's why I was not taking the answer. पीएमटी हमेशा 0 आपको पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है. So you will be able to create something like 1 CR 25 lakh 24,513 in 20 years if this is how we make our investment decisions, ठीक है. तो ये एक another case हो गया which had to be solved with 2 steps rather than 1, ठीक है. Now let's jump to another case. Now this time this is which case, this is 6th case that we are discussing. In this 6th case what we'll take is we'll take different compounding effects. अभी तक yearly compounding थी, अभी we'll take multiple types of compounding. तो एक standard case ले लेते हैं और उसी में हम different compounding को टेस्ट करेंगे कि कैसे उसका impact आता है, ठीक है. So let's say we are making an investment of 1 lakh today. So 1 lakh is our present value.
PMT we are taking as 0. ठीक है. Now we are investing at a rate. ठीक है, हमारी जो rate of return per annum है, that is for the entire year. That rate of return is, let's say, 20%. ठीक है. The rate which is there on per annum basis is 20%. We are not investing anything every period, rather we are just investing 1 lakh today, and the number of times and the number of years for which we are dealing is 5 years. ठीक है, 5 years की बात कर रहे हैं. We want to know the wealth that we can create. ठीक है, wealth कितना create कर सकते हैं, that is what we want to know. But इस wealth creation के हम सब cases ले रहे हैं. A case is where annual compounding is there. That is only once a year. B case is semi-annual compounding. ठीक है, फिर हम ले गए मंथली कंपाउंडिंग. अच्छा, मंथली से पहले we'll take quarterly compounding. Monthly. E case would be daily, and F case we'll take is of continuous compounding. ठीक है. So annual, semi-annual, quarterly, monthly, daily, continuous compounding. We want to calculate the wealth that we can create under different circumstances. ठीक है, when our compounding is happening on different basis. So let's start with the first case. What would be the amount of wealth that we can create in 5 years if it's a case of annual compounding? तो नॉर्मल केस है, यहाँ पर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं रिक्वायर्ड है, सेम जैसे अभी तक करते आए हैं. What should be the amount? So Sarthak has calculated 2,48,832. What about others? What is the amount that we are getting? Everyone? कितना अमाउंट आ रहा है आपका नंदिनी, परिणीता, सिद्धि? मैं कर रही हूँ. ओके, सिर्फ ए पार्ट बोला है, सिर्फ ए पार्ट का आंसर चाहिए अभी. Okay, so Nandini, Siddhi, Sarthak, everyone has calculated the same amount. So very good. So let me also quickly calculate it. So 2,48,832 is the amount of wealth we can create if it is the case of annual compounding. Now, if it is the case of semi-annual compounding, that means that compounding is going to happen every 6 months. तो हमें क्या चाहिए होगा? While putting IY, we will need the rate per semi-annual period rate. We'll need, right? And number of periods में we will need number of semi-annual periods in 5 years. Yes. Try कर सकते हैं. So it will be 20% divided by 2. Yes. And for the years, it will be 5 multiplied by 2, which is 10, right? Yes, absolutely. So rate will take as 10%. Number of periods will become 5 into 2, that is 10.
So Sarthak has already shared his answer. What about others? What is the answer that we are getting? Okay, so I think everyone is getting the same answer. ठीक है, very good. ऐसे ही फिर आप बाकी सब भी कैलकुलेट करो, क्वार्टरली, मंथली, डेली, कंटिन्यूस छोड़ के बाकी सब आई थिंक यू कैन कैलकुलेट. So please calculate. Meanwhile, I am calculating semi-annual one. You can go further and calculate the quarterly, monthly, and daily one. So semi-annual के लिए rate will take as 20 divided by 2. NPR would be 5 into 2. PMT would be 0. Present value would be minus 1 lakh. Amount would be 2,59,374. Very good, Sarthak. So when it comes to quarterly, we'll take is equal to future value. Rate में this time we'll divide by 4 to get the per quarter rate, right? तो rate अपनी हो जाएगी 20% divided by 4. Number of periods would be number of quarters in 5 years, which is 5 into 4, that is 20. ठीक है? So number would be 5 into 4. Rate would be 20% divided by 4. PMT would be 0. Present value would be minus 1 lakh. That's it. The amount would be 2,65,329, which is shared by Sarthak and Nandini. Siddhi, are you able to calculate the quarterly results? Yes, I got 2,65,329. Okay, great. Then after that we have monthly one. Monthly में क्या करेंगे? Rate per month चाहिए, तो divided by 12 करना होगा rate को. And number of months चाहिए in 5 years, which is 12 into 5, that is 60. So is equal to future value किया. And rate में we took 20%. 20% divided by 12. NPR would be your 5 years into 12. PMT would be 0. Present value would be minus 1 lakh. 269,597. ठीक है. And lastly daily की बात करें तो per day का rate चाहिए होगा. Per day के rate के लिए मेरे को क्या करना होगा? What should I do to get per day rate? Divide and multiply by 365. Yes, absolutely correct. So for the rate part, I'll divide 20% by 365. For the number of compounding periods, it will be 5 years into 365. PMT is 0. And present value would be minus 1 lakh. Bracket close, and we get 2,71,753, which everyone is getting. So what is the pattern that we can observe here? The rate is the same, the amount of investment is the same, the number of time frame, that is number of years, total years, is also the same in all of these A to F cases. But what is the difference here? The difference is of the compounding. तो जितने number of compounding periods हमारे increase कर रहे हैं, that means उतने number of times return is being added to the principal to calculate the next period return. ठीक है? तो every day, like in daily, in annual case, only the annual rate of return we took, we added it into the principal to get the next year return. For semi-annual, this process was repeated every 6 months. So every 6 months return got due, added into the principal. So in the next 6 months, we'll get interest on the original principal plus the interest of the previous 6 months. Likewise, if we talk about quarterly data, so for quarterly compounding,
every quarter return will be calculated, added into the original principal, and next quarter's return would be calculated based upon the original principal plus the returns of the previous quarter. Same applies to monthly basis. In monthly basis, every month return will be added into the investment pool, and next month we'll get return on everything, all the interest that we have come across till now. डेली में ये प्रोसेस डेली रिपीट होगा, इसीलिए we can observe that in case of daily compounding we are getting the maximum wealth creation, because the number of times, the more the compounding is there, the more the compounding effect will be seen and the more the wealth can be created. ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक केस हमारा रह गया है, ठीक है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का. एंड लेट मी जस्ट चेक और क्या क्या पॉइंट्स है जो आपके करने हैं. एक परपेचुटी का केस है, मेरे को वो डिस्कस करना है आपके साथ. एक आधा छोटा पॉइंट और है, एंड अनइवन कैश फ्लो का पॉइंट है. ये 3 पॉइंट्स हो गए, एंड ये वाला. So I think 3-4 small points are left, not major points, but small points are left. So what we can do is we can take half an hour from tomorrow's class and complete all the points with respect to this reading. ठीक है, practice के लिए ना we'll try to incorporate a proper routine for practice. ठीक है, कल डिस्कस करते हैं आपका प्रैक्टिस का कैसे रूटीन हम सेट करेंगे, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवा दूं मैं. दैट इज नॉट एट ऑल माय ऑब्जेक्टिव. मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, 2 ऑब्जेक्टिव्स है मेरे. एक, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिले कि हम जो भी बात कर रहे हैं आपको समझ में आनी चाहिए लॉजिक के साथ. ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रटना पड़े, मगअप करना पड़े. पर्सपेक्टिव ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे हर चीज को लेकर के. एंड सेकंड पर्सपेक्टिव है कि आपकी जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितने आपके डाउट्स में क्लियर कर सकूं, जितनी आपकी प्रैक्टिस में करवा सकूं, उतनी ज्यादा हम उस पर फोकस करें. ठीक है, तो अभी कल की क्लास से वील नीड हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस चैप्टर, एंड देन ऑफ कोर्स वील स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. और इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है उसको लेकर के हम क्या बेस्ट रूटीन बना सकते हैं जो कि हम बाकी चैप्टर्स में भी अप्लाई करेंगे. दैट डिस्कशन वी कैन डू टुमारो. ठीक है, so let's wind it up for today. If you have any doubts with respect to today's session, you can ask right now. Any doubts, anything? Yes, Ma'am, are there any investment instruments which offer daily compounding? Daily compounding, well, I don't think so. Any? Yeah, if you are an intraday trader, then daily compounding can happen. If you are an intraday trader, you just square off your position on the same day, and whatever profits you have made today, you can use it tomorrow. So yes, daily compounding is possible there. Okay. Okay. मैम मुझे मेरे पापा अभी जस्ट आए ऑफिस से और वो लेके आए अभी कैलकुलेटर. तो मेरे को बस एक बार वापस जानना, कंफर्म करना था कि अगर हमें बिगनिंग या एंड करना है तो पहले सेकंड दबाना है. हाँ, आपको पहले सेकंड दबाना है, सेकंड के बाद पीएमटी दबाना है, फिर आपको सेकंड एंटर एंड सेकंड सीपीटी. लिख लो, आप कर लेना. सेकंड पीएमटी, सेकंड एंटर, सेकंड सीपीटी. ओके मैम, सेकंड एंटर सेकंड सीपीटी करती हूँ फिर भी बिगनिंग ही रहता है. मैं एक बार चेक करती हूँ. मेरे पास एक्चुअली लाइव कैलकुलेटर है नहीं, तो इसीलिए मेरे को भी चेक करना पड़ेगा. आई विल आल्सो हैव टू वॉच सम वीडियो ओनली कि क्या दिक्कत आ रही है. एक बार आप भी देखना, यूट्यूब पे आपको कोई भी फ्री वीडियो मिल जाएगी इससे रिलेटेड, यू कैन वॉच इट. ठीक है,
बाकी फिर भी प्रॉब्लम आती है तो कल बताना, ठीक है? चलो, ओके देन गाइस, सी यू टुमारो. ओके, टेक केयर एंड मेरी क्रिसमस. बाय बाय. Thank you, ma'am. Maybe